Welcome to Glitz N Blitz presented by pokemonuniteIndia. This is the day 1 of Glitz N Blitz जिसका ऑक्शन हम सब लोगों ने देखा था कल, जो बहुत ही रोमांचक हुआ था। हमारे 6 कैप्टन्स, जो भी हमारे 6 कैप्टन्स थे, उन सब ने अपने अपने प्लेयर्स अच्छे से चुन लिए हैं, उन्होंने अपना टीम सिलेक्ट कर लिए है और आज चालू होगा उन टीम्स में मुकाबला। मैं हूँ जीटा, मेरे साथ मेरे को कास्टर है स्कैडिएट। से हाय स्कैडिएट। Hi everyone, thank you so much for that introduction, Zeta. And yes, बहुत ही रोमांचक ऑक्शन गया था कल, सारे टीम्स वगैरह आए। I honestly think the highest bet was of 65,000 जो कि उस टाइम पे लगी थी. So of course सारी teams are absolutely ready for the tournament, for the matches. Round robin टूर्नामेंट रहने वाला है. जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए. सो इट्स नॉट अ नॉकआउट, it is going to be all teams up against all the other teams. जी हाँ, और एक और बात बता दूं मैं कि जो टीम जीतेगी वो टीम हर एक राउंड में 5 पॉइंट ले जाएगी, और जो लास्ट में ये राउंड रॉबिन के लास्ट में जो टॉप 2 टीम्स रहेगी उनका फाइनल होगा अगले सैटरडे या फिर संडे का अपकमिंग वीकेंड पे. सो बहुत रोमांचक होने वाला है. और स्केड्यूल ये भी बता दूं कि जो टॉप प्लेयर होने वाले हैं, जो एमवीपी होने वाले हैं, जिनके हाईएस्ट केओ होने वाले हैं हर एक मैच में, वो इंडिविजुअल प्लेयर भी 3 पॉइंट लेके जाएगा, जिसके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस होंगे जो जीतेगा उनसे. एब्सोल्युटली. तो फिर इवन दो आपकी टीम शायद मैच ना जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी टीम के पास हाईएस्ट पिक ऑफ्स है, हाईएस्ट केओस है, तो आप 3 पॉइंट्स तो जरूर अपने नाम कर सकते हो. एंड दैट इज गोइंग टू बी इन माय पर्सनल ओपिनियन अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर as into the standings of the round robin stages of the whole table. क्योंकि देयर हैव बीन चांसेस वेयर इन एक टीम अगर जीत रही होती है, दूसरी टीम रिक्वायर्स स्टील करके गेम अपने नाम पे कर जाती है. सो इवन दो 5 पॉइंट दूसरी टीम को मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि टीम ए वाज द वन दैट वाज डोमिनेटिंग फॉर द एंटायर गेम, तो 3 पॉइंट्स उनके नाम पे जरूर आ सकते हैं. सो द डिफरेंस इज गोइंग टू बी ऑफ 2, बट स्टिल एक काफी बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है. जेटा वहीं अगर एक टीम जो मैच जीती है उन्हीं की टीम में अगर हाईएस्ट किल टेकर भी है, तो 8 पॉइंट वो अपने नाम करेगी. दैट इज गोइंग टू बी सो वेरी वैल्यूएबल. और एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं कि जो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं वो प्लेयर को मिलेंगे, ना कि टीम को. सो प्लेयर को भी इंडिविजुअली टैली कर रहे हैं हम. तो जो जीतने वाला प्लेयर होगा लास्ट में, जो एमवीपी बनेगा इस टूर्नामेंट का, उसके लिए भी कोई स्पेशल प्राइज हो सकता है, तो ये बोल रहा था. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अभी हमारे सामने 2 टीम्स ऑलरेडी रेडी होती जा रही हैं. We know which 2 teams are there, right, Zeta? It's going to be Ultron DS and Wink. ये जो मैचअप होने वाले हैं ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, ये बेस्ट ऑफ 1 होने वाला है. तो हर टीम देखेगी, हर टीम चाहेगी कि एक ही मौका मिलेगा. बेस्ट ऑफ 3 नहीं है कि तुम कमबैक करके स्वीप कर जाओ. तो एक ही राउंड में अपना पूरी कोशिश करेगी, पूरी जान दे देगी, और ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है देखने के लिए. तो मैं तो तैयार हूँ स्केडिएट. You're absolutely correct, Zeta. You are also ready. मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ, साथ ही साथ ऑडियंस भी जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि we are jumping into the draft of match number 1 for the evening. विंक की टीम रहेगी पर्पल, यस, एंड डीएस की टीम रहेगी ऑरेंज साइड पे. और पिक्स की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा एक दूसरे. लाइक ये ड्राफ्ट, स्टैंडर्ड ड्राफ्ट जो नया फीचर आया वो मुकाबला नहीं रहेगा. एक स्टैंडर्ड जो सबसे पहले ड्राफ्ट, सबसे पहले पिकिंग फेज चलता आ रहा है वैसे ही होगा. हमको पिक्स की तरफ गौर करें तो हम देख सकते हैं कि अल्ट्रॉन की टीम वो न्यूली बफ्ड एसपियन की तरफ जाना चाहेगी, और उसके साथ साथ डिसेबल ऑन दैट डेल्फॉक्स बहुत तगड़ा होने वाला है. पर ये देखना पड़ेगा कि वो फायर ब्लास्ट खेलती है या फिर मिस्टिकल फायर, क्योंकि मिस्टिकल फायर को रिसेंटली थोड़ा नर्फ मिला है और फायर ब्लास्ट को बफ मिला है. सो इंटरेस्टिंग होने वाला है. उसके साथ साथ अल्ट्रॉन की टीम में है Zuko, who is going to be playing the Machamp Slow Bro, that ultimate of his unimmune ultimate. उसके साथ साथ क्लिफेबल, जो कि बैकलाइन को सॉलिड सपोर्ट देंगे. यार अच्छा टीम लग रहा है अल्ट्रॉन के साइड से. और देखा जाए तो विंग के साइड से है म्यू एंड डेलफॉक्स, सेम पिक्स है. डेलफॉक्स ये भी देखना पड़ेगा कि विंग के साइड की टीम क्या खेलती है, मिस्टिकल फायर या फिर फायर ब्लास्ट, फायर स्पिन. मजा तो जरूर आने वाला है. दोनों टीम्स ने पोक फॉर्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन किया हुआ है, और ये हो गया मैच चालू.
So let's get into the match, shall we? Absolutely, we're gonna see how things are gonna turn out. Yes, Sky Ruins के अंदर हम आ चुके हैं and it is going to be Team Wink on the purple taking on Team Ultron DS on the orange. Standard rotations दोनों ही टीम की तरफ से. We're not seeing any unique thing. दोनों ही टीम में Delphox is the one who's jungling. So probably ideology दोनों की same ही रहने वाली है इस situation में that they want their junglers to farm up as quickly as possible. Chances है कि शायद हमें early skirmishes उतनी ज़्यादा देखने को ना मिले ज़ीका. Yeah, and ये इंटरेस्टिंग लेनिंग फेस चल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम विंक. टॉप लेन में देखा जाए तो ट्रेवेनेंट एंड कंफी कॉम्बिनेशन से उतरे हुए हैं. ये नया देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी रिसेंट पैच में ट्रेवेनेंट जो बफ हुआ है, ही हैज बीन इनसेन, अनस्टॉपेबल. सो उसके साथ कंफी पेयर अप किया जाए तो कैन बी अनकिलेबल. वो कंफी जो है ना एक पॉकेट पोशन की तरह है और एक बॉट लेन में यहाँ पे एक जबरदस्त सोलर बीम आते हुए म्यू के साइड से. Wink trying to get those bees on the bot lane and Espion ज़्यादा secure करके जाएगी from the side of team Ultron DS here. So leaning phase तो होती ही रहेगी पर ये interesting combination of heroes है top lane में जो नए मेटा को adapt करके दिख रही है Wink की team. You are absolutely correct on that. and साथ ही साथ हमें देखने को भी जरूर मिल रहा है कि विंक की टीम ही थोड़ा सा डोमिनेट भी करती हुई दिखाई दे रही है टॉप साइड पे. मचैम्प उतना ज्यादा स्ट्रांगली अभी अपने लेनिंग फेज में अपना शो दिखा नहीं पा रहे हैं. सो साइड बाय साइड, just as you mentioned, the new meta that you just now referred is the one that is leading the charts for now. But we can clearly see हर्ष को अपना final evolution भी मिल चुका है. He's level 6 at this point. Zuko also might actually get a pick off, but उसके बावजूद may भी फंस सकता है बहुत बुरे situation में. He will be taken down right away. That's one pick off already, and she's also trying to run away. Will try to somehow survive, but was not allowed to do so. Stand up at a position, taken down easily. Yeah, and there goes another pick in response from the side of team Ultron DS. पे म्यू पिक ऑफ होता हुआ दिखा है हमको. एंड या एक सुंदर का सोलर भी आया था म्यू के साइड से मिड बीस पे. और उसके साथ साथ टीम विंक ने यहाँ पे 2 kills लिए बट अनफॉर्चुनेटली म्यू भी डाउन होते हुए दिखे उधर. कंपी का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट उनके ट्रेवेनेंट को. वुड हैमर इज डूइंग सच एन इनसेन जॉब डीलिंग डैमेज. तो हाँ, जैसे हमने टॉप लेन में देखा था, आपने बोला कि स्ट्रॉन की थोड़ी डोमिनेटिंग दिख रही है, पर मैं कहना चाहूंगा कि कंफी है ना कड़ धमाका तुमको दिखेगा जाते ही. जैसे जैसे मैच गुजर रहा है वैसे वैसे तुमको उसका समझ में आएगा कितना पावरफुल है. एंड देयर गोस अनदर ह्यूज वुड हैमर onto the table and Machamp, the damage coming in from this Trevenant is insane. एंड जो पॉकेट पोशंस मिल रहे हैं ना कंपनी से, ही इज गोना बी अनकिलेबल. वैसे भी पेड ऑलरेडी अनकिलेबल है और भी अनकिलेबल हो गया. मिस्टिकल फायर से खेलते हुए दोनों डेल्फॉक्स यहाँ पे दूसरे डेल्फॉक्स को डाउन कर दी जाएगी. स्नो ब्रो गेट्स अ पिक ऑन टू एस्पियन हियर. वेस्टर चाहेंगे यहाँ पे एंगेज ना करे क्योंकि अल्ट्रॉन डीएस के जंगलर अभी भी जिंदा है वहाँ पे. मे बी एक स्टील हो जाए स्कॉल्ड से. नहीं, उन्होंने ट्राई तो किया जरूर वापस आके, पर बहुत लेट हो गए थे वो. So the Reggie of bot lane goes in favor of team Ultron DS here. and goals की तरफ भी एक बार गौर किया तो हमको दिख रहा है कि Ultron DS is currently the one who's dominated the laning phase. Absolutely, अभी 2 to 41 का टोटल स्कोर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे. 39 का that's the total difference. We know that इतना ज्यादा नहीं होता है and we are yet to see a full fledged 5v5 fight. फिलहाल Mutinant might be in trouble. There goes the Woody Hammer. He will actually try to survive, but साथ ही साथ capable के ऊपर भी उन्होंने Unite Force of करवा दिया है, but Trevenant will not survive this first. He will not survive this damage. Tier 1 top, he has been taken down by Ultron DS, and now they will focus quickly towards the Regieleki. Interesting choice that वो लोग टॉप लेन को लाइक जैसे ही रेजिएलेकी बॉट लेन का लिया, उन्होंने पुश करने का ट्राई नहीं किया बॉट लेन को, सीधा टॉप लेन आ गए. एंड अल्टीमेट एंड यूनाइट मूव चल गया है डिसैपल से फ्रॉम द साइड ऑफ टीम डीएस टू पुश दैट टॉप लेन टरेट. वो अच्छी बात है. टॉप लेन टीयर 1 की बेस टूट गई है. अभी रेजिएलेकी इज गोना बी मार्चिंग डाउन टू द टीयर 2. और देख वो ऐसा रहा है कि टीम विंक लगने देगी वो टरेट के लिए. हाँ, सब लोग बेस में बैठे हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि कुछ लैग इश्यूज है उनके साइड से. they might want a restart here. that's why they all have been sat in the base.
The moderators will take care of that. But yes, from the side of Team Ultron DS, अभी तक तो सिर्फ domination ही दिखा है हमको. Right, Scalia? And you know, yes, for now, till now we've been seeing the domination from their side, but they're also not giving up on the opportunity that they know that their opponents are all sitting in their bases. वो सारा का सारा farm भी quickly steal कर रहे हैं. They're also taking down all the outer towers, the objectives that they can take. So the score difference has risen to 268 since it's never mind. Now the score difference is 311, 313 to 2. That's a massive lead for now that Ultron DS has, and I personally don't think so. Wink will be able to somehow make a comeback in this game if in case they're still deciding to stick into their bases, because the level disparity is also kicking in. Level 8 to level 13, that's a huge lead for now जो कि Disciple ने create कर रखी है. And हाँ देखा जाए तो team Ultron DS was smart enough to clear the enemy jungle, not letting them level up. But yes, there goes the surrender here. I think there would be a restart. I'm sure that the management will let us know. पर एक बार गौर करते हैं हम Disciple के destruction की तरफ, जो टॉप लेन पे उन्होंने फाइट लिया है टीयर 1 के बेस पे, अल्ट लगा के बिना झिझके, लाइक बिना कुछ सोचे, he trusted his team, he went in and he got that first tier 1 of that top lane right as they go in for the Regieleki. वहीं पे कहीं ना कहीं से हमको पता चल गया था कि टॉप लेन टीम विंग हार चुकी है और टीम ये मैच का अपर हैंड टीम अल्ट्रॉन डीएस के पास चला गया है कंप्लीटली. Advantage, yes. They actually gain the advantage right from that specific rotation, and that's exactly a correct analysis. Zeta, उन्होंने रोटेशन में अपने ओपोनेंट को एक बहुत बेहतरीन मात दी थी वहां पे. They managed to take down the bottom Regi objective. उसके बाद quickly they went in for the top Regi लेके tier 1 निकाला. They knew कि Trevenant और Comfy ही है वहां पे. They knew कि अब उनके पास enough burst damage है to take Trevenant down, even though Trevenant was still using his skills. He was trying to get that regen in, but उसके बावजूद the burst was just way too much for him to handle, even though Comfy का support साथ साथ चल रहा था. After taking him down, taking that tier 1, converting it to into a Regi Leki, and साथ ही साथ going in, stealing away the farm of your opponents. That was just a picture perfect gameplay coming in from the side of Ultron DS. So it's just as you said, टॉप प्लेन में उन्होंने एक एडवांटेज टीयर 1 के पास लेनी शुरू करी थी, एंड उसके बाद उन्हें छोड़ा ही नहीं, एंड दे हैड द कंट्रोल. दे वर द वंस हु वर ड्राइविंग द एंटायर फ्लो ऑफ दिस मैच. And let's go back to the excuse me, let's go back to the Comfy and Paid combo. उसको पेड़ बुलाया करते हैं हम, ट्री यूं ही नहीं, क्योंकि वो मरता ही नहीं है, एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, मरेगा नहीं. और जो अभी रिसेंट बफ आया पेन स्प्लिट और वुड हैमर का, इट्स बीन इनसेन. उसको कंबाइन कर दिया है कंफी के साथ, जो एक पॉकेट पोशन है. जब चाहो तब चाहो, एक 10 सेकंड में पोशन मिलता ही रहेगा. ऑलरेडी अनकिलेबल प्लेयर, ऑलरेडी अनकिलेबल कैरेक्टर को मिल गया है कंफी का साथ. मुझे एक्चुअली में लगा कि ये बहुत अच्छा एडवांटेज, लाइक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम विंग. बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्बो, लाइक वो कीवी में जितना अच्छा लग रहा था, वो उन्हें प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं, और टॉप लेन का डोमिनेट होता गया. आउटनंबर हो चुके थे उस सिचुएशन में. दो जहां तक 2v2 की सिचुएशन थी, तब तक तो it was clear that Trevenant is the one that's having the upper hand. जैसे ही वहां पे बाकी दोनों मेंबर्स की भी रोटेशन आई, स्पेशली बाय Disciple, who is the jungler of Ultron DS, उसके बाद से they just managed to take the entire control of the game. So for now, we're going to wait and see what is going to be the decision from the team, and side by side, अभी wait करेंगे, are we going to get the restart or not? But even after that, looking at the entire situation, looking at the rotation, Zeta, अगर यहाँ पे इस point पे restart होता है, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम के पास upper hand रहने वाला है? Just looking at the draft and the early rotations जो हमें देखने को मिली. जो टीम अल्ट्रॉन डीएस थी, दे वर अप ऑन टू पॉइंट, लाइक पॉइंट टू पॉइंट खेल रहे थे. वो एग्जैक्टली जो करना चाहते थे वो करने का प्रयास वो करके दिखा रहे थे.
बट मे बी ड्यू टू सम लैग इश्यूज टीम विंक उसको काउंटर नहीं कर पाई, जो प्ले लेके आए थे वो ध्यान में वो नहीं कर पाए, इसलिए मे बी ये रीस्टार्ट का मामला चल रहा है। देखना पड़ेगा, ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा टीम जीत जाएगा, क्योंकि जैसे ही नेट ठीक हो जाए क्या पता टीम विंक might be the ones who will have the upper hand onto the side of Team Ultron. Maybe. Highly possible, highly possible. And side by side, we've got the information from the mods that we will have the restart. Referees have verified the issue was correct, and now we are going to have the restart of the match. So, Team Wink versus Team Ultron DS. We're gonna have that once again right in front of us without any issues now. So I know everyone in the audience have been waiting for this. In the meantime, quickly hit that like button as well as click on the subscribe and click the bell notification, because आप नहीं चाहोगे कि आपके favorite captains के matches आप miss कर दो. You would definitely want to jump in to support all of them for all of their matches. So make sure to quickly hit that subscribe as well as the bell notification, and Discord server join करना मत भूलना, because all the updates are going to be on the Discord server. Make sure to check the link in the description. And Zeta, अब क्योंकि वापस से रीस्टार्ट होने वाला है, are you expecting the similar kind of draft? Yeah, I am pretty sure that दोनों टीम सेम ड्राफ्ट के साथ उतरने वाली है, क्योंकि that is the rule of restarts. और maybe not, maybe ड्राफ्ट में ही लैग आउट कर लिया था टीम विंक ने, maybe इसलिए कुछ थोड़ा सा बदलाव का चांस हो जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि कोई बदलाव नहीं होने वाला, दोनों टीम ड्राफ्ट के साथ उतरने वाली है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको कौन सी ड्राफ्ट अच्छी लगी? दोनों में डेलफॉक्स है, दोनों में स्लोग्रो है, आपको उन दोनों टीम्स में से किसकी ड्राफ्ट ज्यादा बेहतर लग रही है? Honestly, looking at the Trevenant and Comfy combination, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद विंक की टीम आउट सस्टेन जरूर कर जाएगी उस सिचुएशन में, because the amount of attention that Trevenant and Comfy's combo would require to actually take them down, उतने टाइम में Wink के members will get the opening to actually go around, find that gap, finish off their backline. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद ये कॉम्बो जीत जाए, बट अगेन वी नो क्लेफेबल का गॉड लेवल हील जो कि आने वाला होता है अपनी बैकलाइन को बचाने के लिए. सो दैट माइट समहाउ बी द की of the entire outcome of that fight. अगर Cliffable is taken down early from those fights, अगर उनको जल्दी pick off कर लिया जाता है without utilizing a lot of resources, then it's going to be a major blow, a major hit to Ultron DS's squad. So that probably is going to be the priority for Team Wing. So looking at the composition, I think Team Wing might have the upper hand in team fights. एंड आपने ये बढ़िया पॉइंट आउट किया है गुरु, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात कि एक टीम के पास है क्लिफेबल पर दूसरे के पास क्लिफेबल नहीं है, और क्लिफेबल इज अ हीलर दैट कैन हील ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम। जैसे कंफी है, वो पॉकेट कंफी होती है, वो पॉकेट ही खेलती है, एक प्लेयर को स्टिक करना चाहेगी, वो सबको हील नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स उनके अल्टीमेट में वो सबको हील कर सकती है, पर दैट रिस्क्स the side of team, the side whichever side comfy is, कि वो सब लोग एक ही बुश में आ जाए, वो अल्टीमेट बुश में आ जाए और उनका पोजीशन रिवील हो जाए सबका। एंड comfy का ग्रुप हीलिंग नहीं है, एंड यस दैट इज one of the best analysis that I found out. Again, the other discomfort that team having Cliffable would have is that बैकलाइन हीलर नहीं है, आपको ग्रेविटी सिर्फ बैकलाइन बचाने के लिए मारना पड़ेगा एज अ क्लिफेबल, राइट? एग्जैक्टली। ये बैकलाइन बचाने में कभी कभार बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि फ्रंट लाइनर को भी हील चाहिए होता है, जैसे कि मचान हो गया, स्लोग्रो हो गया, और तुम बैकलाइन पे नहीं ध्यान देते हो, तब थोड़ा पोजीशनिंग का गड़बड़ हो जाता है और उस समय क्लिफेबल फील कर जाती है मेरे हिसाब से। तो हाँ, एक बड़ा एडवांटेज भी है क्लिफेबल के रूप में और एक छोटा लाइक एक डिसएडवांटेज भी है। और चलिए, मैच तो स्टार्ट हो गया है, वापस मैच में चलते हैं। जैसे कि कहा था, सेम ड्राफ्ट होंगे दोनों साइड से, और यहाँ पे दिस टाइम दोनों के लीनिंग फेस का थोड़ा आइडिया रहेगा दोनों टीम्स को, तो वो ध्यान से खेलना चाहेगी। लास्ट रीस्टार्ट से पहले जो लीनिंग फेज हुआ था, टीम अल्ट्रॉन डीएस क्लियरली हैड दी 40 पॉइंट्स लीड,
वैसे होगा नहीं, तो गलतियां जो हुई थी वो रिपीट नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से खेलेंगे, मजा आएगा देखो। एब्सोल्युटली। फिलहाल दोनों ही टीम का ऑपोजिट लेन की तरफ एग्रेशन दिखता हुआ। फिलहाल अल्ट्रॉन डीएस की एचपी थोड़ी सी ज्यादा लो, विल रिट्रीट टू सेफ्टी। ऑलमोस्ट पिक ऑफ हो गए थे वहां पे ज़ूको, बट स्टिल अभी सरवाइव कर जाएंगे। बेरी लेके वापस एचपी फुल कर ली है। नाउ the next skirmish that we will see will be around the bees, but that was a very good aggression coming in from the side of Pink. कहीं ना कहीं टॉप लेन में उन्हें पता है उनके पास एक एडवांटेज है, उसी का फायदा वो कंटिन्यूसली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अंश इज डेफिनेटली अपने एरिया में लीड लेके बैठे हुए अपने ओपोनेंट स्लो ग्रो से, बट फिलहाल म्यूटेनेंट फटाफट से he'll just try to secure that creep away and will retreat back to safety, but for now we'll have to wait and see which team gains the advantage. एसपीऑन वर्सेस म्यू चल रहा है बॉट लेन में, बाद में बात करते हैं। यहाँ पे मिड भी स्पॉन हो चुके हैं, going in with this apple here. Zuko gets picked off by Trevenant right there. So top laner down, a big team side of Team Ultron and trouble here. Mew का एक और शानदार solar beam onto Trevenant, like onto Cliffable I mean. And देखा जाए तो के हिसाब से right now Wink has a better upper hand, और यहाँ पे बॉट लेन पे डाउन होते हैं। स्लोब्रो को पिक ऑफ किया है यहाँ पे। टीम विंक का जो जंगलर है डेलफॉक्स वो नीचे है, एंड लेन स्कर्मिश वापस आते हुए टॉप लेन के बीच स्पॉन होंगे, साथ ही साथ बॉट लेन के भी बीच स्पॉन होंगे। ये वुड हैमर जो जायंट हथौड़ा सर पे फूटा है मचान के इसके साथ उनको and look at that burst damage दोबारा से continuous damage यहाँ पे म्यूटेनेंट अपने ट्रेवेनेंट का दिखाते हैं। that combination with Comfy, man, you know that Woodhammer CC is coming and he's using it so well. He's making sure कि मचान और क्लिफेबल दोनों are lined up and then he's just smashing them ताकि दोनों combined splash damage लगे। but for now we can clearly see कि DS की टीम have got the priority in towards that bottom side, क्योंकि Regis के ऊपर अभी उनका clear cut control आता हुआ। They will try and secure it as quickly as possible, but side by side we can slowly see the retaliation। DS की टीम ने secure जरूर कर लिया Regis को। They will have a slight advantage in the fight, but side by side that's gonna be a major pick off already। Disapple making sure कि अपने opponent jungler को वो shut down कर दे। They also secured the Regis and they managed to take down the jungler of their opponent, so that is a very big win already from the side of Ultron DS. Yeah, and coming back to the point, मैं जैसा कि कह रहा था बीच में रोकना पड़ा कि when it comes to bot lane attackers पोक में जरूर, and onto Disapple maybe Trevenant going in with Comfy यहाँ पे पर बच निकल। What? Disapple एकदम low HP में finally बच निकलते हैं ट्रेवेनेंट से। वो दिखा दिए ट्रेवेनेंट एंड कंफी का कॉम्बो कितना डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे। अब ब्यूटीफुल सोलर विंग कमिंग इनटू स्लोब्रो विल गो डाउन विद द हेल्प ऑफ अल्टीमेट फ्रॉम द यूनाइट मूव फ्रॉम डेलफॉक्स आई मीन पीपल गोइंग इन विद यूजिंग ग्रेविटी हियर। एस्पियन एंड डेलफॉक्स ट्राइंग टू पोक एज मच एज दे कैन, बट ये वुड हैमर वाला ट्रेवेनेंट पड़ गया है एस्पियन पे भारी। यहाँ पे पिक ऑफ होंगी की टेबल भी, पर दिख रहा है कि टीम विंक is actually in the upper hand this time around. Absolutely, but there's still one more thing that I would like to point out कि वहाँ पे bottom side में 5v4 का सिनेरियो था। Zuko did not go in for the rotation. उसने अपनी टीम को सबसे पहले टॉप साइड में प्रायोरिटी दिलवाई है by taking that tier 1 down, and now that gives them the opening to actually jump in and contest the Regileki, but Disapple has been disappeared from the entire map क्योंकि Mutinant with his Trevenant was not letting them do anything. Zuko की HP बहुत ज़्यादा लो, Beam connects, they will manage to take Zuko out of the picture as well, though because already main damage dealers के ऊपर Slowbro other tank will not be able to survive that outburst, and tier 1 has that quickly been taken out। अभी disappear हुई है tier 1 top side पे। Zuko की तरफ से एक ब्यूट बराज ब्लोज आए हुए थे with the use of eject button। मुझे ऐसा लगा था कि ऑलमोस्ट ले ही जाएंगे, बट यू नो ट्रेवेनेंट के होते हुए वो हुआ नहीं। सक्सेसफुल सिक्योर दिलाते हुए अपने टीम को यहाँ पे फायर हुआ। चल जाएंगे डेलफॉक्स के फ्रॉम द साइड ऑफ डिसैपल हियर। बॉट नहीं देना चाहेंगे टॉप लेन के बाद। हियर स्लोब्रो का यूनाइट पड़ता हुआ म्यू पे रोकेंगे जरूर सिक्योर होने से।
पर मैं स्टार्टिंग से एक पॉइंट कहना चाहता था कि पोक के हिसाब से टीम विंक के पास म्यू है राइट, पर सिक्योर स्पियन का बेनिफिट है म्यू से। सो वहां पे ऑलमोस्ट हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव्स मिल रहा है स्पियन को एंड द साइड ऑफ टीम डीएस हियर। एस्पियन गोज डाउन जस्ट एज वी स्पीक अबाउट एस्पियन। एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं एक ऑफ पोजीशन वाली सिचुएशन में उनको पकड़ा था एंड व्हेन ही वाज जस्ट इजीली बर्स्टेड डाउन। उतना टैंकी अभी बिल्कुल नहीं है वो, ही इज बीइंग मेल्टेड डाउन बाय डेलफॉक्स एज वेल एज म्यू। एंड जस्ट एज यू मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग के पोक डैमेज के कॉम्पोजिशन की तरफ दोनों ही टीम्स गई हुई थी एंड इन दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आई पर्सनली फील लाइक कहीं ना कहीं विंग की टीम को थोड़ी सी एडवांटेज जरूर मिल रही है, बिकॉज म्यू डेलफॉक्स दोनों ही आराम से लॉन्ग रेंज से कंटिन्यूस पोक दे रहे हैं। इवन दो Slowbro did manage to land his unite on Mew, पर कहीं कोई भी सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, कोई बैकअप नहीं था। They were not able to go in for that pick off क्योंकि उनकी बाकी टीम was being zoned out by Trevenant. So that is the play that they need to somehow come across again and again, and they somehow have to find an opening जो कि एसपीओन को अभी नहीं मिली है। But again, this apple seems to be in trouble, almost taken down. Yes, he will be Mew with the final pick off, but Zuko अपने burst के साथ जरूर जाएंगे। He went in way too aggressive, and now Slowbro coming in for the support. Mew goes in triple. This guy is not stopping at all, and now Pumpkin दोबारा से अपनी rotation जरूर देने वाले हैं, but George Kilua playing absolutely amazing. या जो डैमेज दी के रखा था हर्ष ने उनके जंगलर ने, उनको सक्सेसफुल पिक ऑफ किया है एंड टियर 1 अटैक किया है। यहाँ पे ट्रेवेनेंट अंदर जा रहे, ही इज बीइंग अनोइंग फॉर द साइड ऑफ टीम अल्ट्रॉन डीएस। उनको कोई क्लू नहीं है कैसे डील करे ट्रेवेनेंट के साथ, और वो बहुत अच्छा खेल रहे कंफी के थ्रू। एंड या एक बहुत अच्छी रणनीति रची थी उन्होंने, और ये प्रैक्टिकल में, आई मीन थियरी में, प्रैक्टिकल में भी दिखाई जा रही है। You're absolutely correct at that. 246 to 144, 102 total score lead in favor of Team Wing. तो DS को कहीं ना कहीं रेजिले की फोर्स करना ही करना पड़ेगा, and that is exactly what Wing wants. They want के उनके ओपोनेंट डीएस रेजिलेकी को शुरू करे, एंड वंस दैट हैपेंस दे विल हैव द ओपनिंग टू जंप इनटू द बैक लाइन, क्योंकि म्यूटेंट की पोजीशन देखिए आप, टॉप साइड की तरफ से उनका कोई चेक नहीं है उनके ऊपर। ही विल इजीली जंप इन टुवर्ड्स डेलफॉक्स, बट फिलहाल अंश काफी ज्यादा फोक डैमेज लेते हैं यहाँ पे। क्लिफवी की यूनाइट भी यूज हो गई, स्लोप ने भी अपनी यूनाइट यूज करी है। दैट वाज अ वेरी गुड नॉकअप, बट कोई भी फॉलो अप नहीं है। म्यूटेंट जंप्स इन, goes in for the wooden hammer, take down almost 2 members. At least HP बहुत ज़्यादा लो कर देती, but side by side Zuko will manage to somehow take down Killua, but उसके बावजूद his own backline has been in so much trouble. But उसके बावजूद this apple 39 का score, will he be able to do that? Will he be able to score that? Yes, he was able to, but उसके बावजूद they are behind by 24. Mutant अभी भी खड़े हैं with the support of Comfy, Cliffable, Slowbro, साथ ही साथ Disapple. All three of them are just trying to take him down, and look at his HP increasing gradually. He's back to full, and he will be able to take probably Cliffable down if they continue to jump in with this poking fight. And yes, he has done that. No more healer for the backline of Ultron DS. Pumpkin OP, HP quite low, will try to survive, but Mutant is just tanking each and everything, and Mitileki has been secured easily by Team Wing, and now they'll just jump in for those 500 scores. Actually, well played, very well played by the side of Team Wing here. जो ट्रेवेनेंट ने बहुत ही अच्छा दाव खेला है वहाँ पे, मैंने नोटिस किया है। 1 मिनट में बता ही दूंगा, यहाँ पे टाइम जब हो चुका है, and this victory is gonna go for the side of Team Wing here. Congratulations to that team, and yes, टीम डीएस को, अल्ट्रॉन डीएस को रेक्वाजा लेना ही था, पर अनफॉर्चुनेटली वो जो टीम फाइट हारे हैं म्यू के वजह से, एक सुंदर सा सोलर बीम आते हुए 2 पिकआउट्स ले गए, एंड डेलफॉक्स का फायरवर्क्स, हर यूनाइट मूव जस्ट डूइंग सो मच डैमेज। मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। 2 स्टेप्स में चलती है, एक सबको एक साथ लाता है, दूसरा हथौड़ा मारता है। म्यूटेंट ने बचा के रखा था अपना सेकंड स्टेज ऑफ दैट स्किल सो दैट ही कैन सिक्योर, एंड ही गॉट द सिक्योर कंफर्टेबली। जो अच्छा दिमाग, जो माइंड प्रेजेंस उन्होंने लगाया है, वो बहुत ही बढ़िया था, और उनके टीम को जीत दिलवा दी। ऑलरेडी जीत रहे थे, जीत कंफर्म करवा दी है। और यस, unfortunately for the side of team
Ultron DS, this is gonna be a loss for them. So yeah, comfortable victory. Absolutely, कहीं ना कहीं they had that scoring advantage. Starting में पीछे जरूर थे, but उसके बावजूद look at where things turned around between that 5 minute mark, 4 and 5 minute mark, जहाँ पे उनकी टीम ने scoring start कर दी थी when Trevenant joined the fights. Mutinant जब Comfy के साथ fights में आने लगे, he was the one who was taking all that aggression onto himself. And क्योंकि वहां पे damage उतना ज्यादा नहीं था that they'd be able to take him out, they were ending up just poking him and Comfy was continuously healing him back up. And side by side, Golden Hammer, जैसे कि आपने बताया, दो parts में वो use कर रहे थे, he was using it so very well. He was just making sure that it always landed onto that back side, that back line of the side of Team Ultron DS. That was a very smart play coming in from Wing, and they managed to grab their first victory. That was such an entertaining match right in front of us. But again, Zeta, we now know what the next match is going to be between which two teams. That's going to be Bit 200 and Nancy. Yeah, this is going to be an exciting matchup here. Last match, Team Wink विक्ट्री के साथ साथ 8 पॉइंट ले गई है कि म्यू जो है जॉर्ड किलोआ ही वाज द हाईएस्ट केओस ही वाज द पर्सन हु गॉट द हाईएस्ट केओस देयर सो विद विक्ट्री के 5 पॉइंट के साथ ही साथ 8 पॉइंट्स लेके वो आगे जा रहे हैं उनके नेक्स्ट मैच की तरफ एंड हम भी अपने नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं चलो नेक्स्ट मैच है बिटवीन टीम बिट 200 एंड नैंसी हियर This is going to be an amazing match. I'm looking forward to it because बहुत सारे ऐसे जान पहचान के प्लेयर है यार इस मैच में. मोस्टली पब्लिक की नजर जरूर इस पे रहने वाली है कि उन्हें एमजी के वो साइड पे दिख रहे हैं एंड स्नोई दूसरे साइड पे एंड even in yesterday's auction we actually heard Volk saying that MG players just want to face off against each other तो वही face off हमें अभी देखने को मिलने वाला है एक्सट्रीम के ऊपर and this is going to be a very important match for both of these teams because just as you said in the previous game Team Wink winning those important 8 points is going to put them in a pretty decent lead in the leaderboards. So उस चीज को cover up करने के लिए of course both of these teams will definitely try to target that specific 8 point mark but just as you mentioned all the other players Shrey, Tejas, Darkrai, Sadao, Coffin, Naruto they'll all just try to get those KOs and they will try to make sure that they are the ones who've got the highest KOs. So even though they might not get the match, they will at least get those 3 important points. So देखना रहेगा क्या situation रहेगी. But again, in this specific draft, Zeta, are you expecting a similar kind of thing that we just saw with a Comfy on one side and a Clefable on the other side, or are we going to see a Blissey, or we're just going to bring back the Mama Swine Snorlax combo? क्या पता दोनों की साइड तो एमजी के दो धुरंधर बैठे हुए हैं उनके मन में क्या चल रहा है उन्होंने कैसा अपने टीम को सजेस्ट किया होगा उसी से चलते देखेंगे एसीएल के चैंपियंस है ऑफ कोर्स दे आर गोना बी गोइंग टू मलेशिया सून representing India in the Asian Champions League. 2 players on the opposite sides. मजा तो जरूर आने वाला देखने के लिए. And जैसे ही हम ट्रेवेनेंट का बात कर रहे थे, side of team Nancy is gonna go Trevenant here. Interesting. Comfy होगा साथ नहीं उसके साथ ब्लिसी होगा इस बार. I mean, look at the situation. हम normally Trevenant की जगह we usually see Swine or Snorlax, but for now, it's Blissey and Trevenant for the front lining. And side by side, Snowy ने Dodrio को lock कर लिया है. We're also seeing Zoroark from their side. So, Team Nancy, they actually have an idea wherein they just want to jump in towards the back line of the side of Bit 200. So, looking just at the draft, I'm somehow leaning in towards Team Bit. They've got Trevenant, they've got Hoopa. Yes, उतनी ज़्यादा healing उनके पास नहीं है, but again, they've got the Snorlax as well. And कहीं ना कहीं I believe Trevenant is going to be the key factor in those specific, engagements wherein he will actually try to line all the other people up ताकि Mew के Solar Beam का सबसे ज़्यादा value उठा सके वो इस situation में. Trevenant तो दोनों टीम में तो फिर दोनों टीम का की प्लेयर वही हो जाएगा. इस सिचुएशन में कौन जीतेगा?
Not exactly. I personally feel like Snowy and Sadao will have a major job of taking Volk out of the picture because dono ke dono are an assassin. Their only job in this specific game should be to target Volk, should be to take him out. Because if they're able to take that poke out of the picture, they'll actually have a much better chance into securing the neutral objectives side by side. Um, I feel like the major damage is somehow revolving around Volk as well for the side of Bit. So if they're able to take him out of the picture, एक और इंटरेस्टिंग एनालॉजी ये है कि फॉर द साइड ऑफ टीम Nancy, they have been two speedsters. Okay, two speedsters and backline like बहुत squishy composition के साथ उतरी हुई है. बिकॉज दो स्पीडस्टर्स है, एक व्यू है जो ऑलरेडी स्क्विशी है पर बहुत ज्यादा मोबाइल भी है. तो फॉर द साइड ऑफ बेट अगर उन्होंने मैनेज कर लिया कि किसी भी एक बैक लाइनर पे उनके मेन डैमेज डीलर पे कोई स्टन लैंड करे तो पूरी टीम स्क्विशी दिखने लग जाती है, स्क्विशी दिखना चालू हो जाती है. यहाँ पे कॉफन अंदर जाते हैं, स्टैक सक्सेसफुली ले रहे हैं पर पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे. यहाँ पे ड्रैगनाइट नीचे के साइड पे कैंप देता हुआ ऑलमोस्ट टेकिंग डाउन ट्रेवेनेंट कॉफन हियर ऑन द टॉप साइड. जो स्टैक के लिए गए थे डोड्रियो, ही इज गोना गो डाउन बट ये एग्जैक्ट रिप्लाई में ऑलरेडी एक और केओ डाउन कर दिया है साइड टीम नाइनटी. That was a good rotation by Sadao, somehow turning that around in that situation. But Naruto will be taken down. Ball काफी अच्छे लगाई थी. Will manage to retreat back to safety. But कहीं ना कहीं bottom side में it's a clear cut advantage towards the side of Team Bit, and that is just how you predicted. We know that their whole composition is so very squishy. But Zoro or Sadao, where did you bring the damage out from? जोरो आर्क लेवल 5 के बाद अनस्टॉपेबल बन तो जाता है पर वो साथ ही साथ स्क्विशी होता है. एंड सो डज ड्रैगनाइट. जब तक उनके पास हाइपर बीम या आउटरेज नहीं आ जाता, ही इज गोना बी वल्नरेबल देयर. एंड उसी चीज का फायदा उठाते हुए टीम नैंसी बंसल के साइड से जोरो आर्क जाते हैं जंगल में एंड देयर ही गोस पिकिंग आउट म्यू कैन ऑन द साइड ऑफ नैंसी. यहाँ पे जोरो आर्क काफी परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं एनिमी टीम को. बहुत परेशानी होगी उनको रोकने के लिए भी if he gets fed in early game. I was not quite sure what Volk was actually planning to do in towards the jungle of Nancy. I mean, yes, he would want to invade, but again, you are very squishy. You will be picked off as soon as you are seen. But for now, the punish was definitely there. But Naruto will try and go in for that scoring in towards that bottom tier 1. The situation still seems to be somehow equalized. Score 71-70, and look at how well Zoro Arc is playing. Sadao will not be able to survive the wooden hammer though. Blissy ka heal kahin na kahin aata hua, but it is not at all enough. The rotation from Dragonite, that was the key turning point in towards that top side, and they will manage to take the tier 1 down. वो देखना जरूर पड़ेगा कि खेल क्या रहा है ड्रैगनाइट. आउटरीच और इजी प्लेइंग हाइपर बीम, बिकॉज आउटरीच रिसेंटली बफ हो चुका है और अभी तक हमने किसी भी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट में देखा नहीं है किसी को आउटरीच यूज करते हुए. तो क्या पता फॉर द साइड ऑफ टीम बेट हमको कुछ नया दिखा दे, हमको दिखा दे कि ड्रैगनाइट विद आउटरीच इतना अच्छा क्यों है. पर मैंने तो देखा नहीं. यहाँ पे बॉट लेन का ऑब्जेक्टिव कंटेस्ट जरूर हो रहा है. जोरो आर गोइंग इन विद दैट feint attack of his up. So now the solar beam coming in from that new Naruto picks up a kill. Wait, no, he just gave the damage here and Dragonite will definitely be securing that treasure rock here. A beautiful heavy slam as well coming in from Haze here. Revenant will go down for the side of Team Nancy here and ये team fight जीतते हुए Team Bit बहुत अच्छा domination दिखाते हुए early game में. And it's just as you expected. हमें देखने को क्लियरली मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक टैंकीनेस की कमी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. बट फिलहाल Sadao was actually able to take Snorlax down and the backline support from Naruto. With that, they actually managed to take the tree out as well. Woodcutters नाम देना चाहिए इन लोगों को. But jokes apart, they will try and take down the tier 1 on the bottom side. कहीं ना कहीं टॉप साइड की अभी भी 3 HP में बचा रखे उन्होंने टर्रेट को. But finally, Hoopa will take that down as well. Dragonite going in for the Regieleki alone. HP थोड़ी सी लो जरूर है
हो सकता है बैक लाइन से अगर कोई एक लॉन्ग रेंज अटैक आ जाए दिक्कत पड़ जाए, बट he was able to secure the Reggie without any problem, and side by side Coffin seems to be in trouble. चार लोगों के बीच में थे. They made sure to send him where his name suggested that, but Reggie in towards the top side on tier 2. Nancy अकेले उसको रोकने की कोशिश में. फिलहाल there goes Hoopa unleashed. They will try to force to that tier 2, and Unite comes out of the Dragonite as well. आज जरूर चुका है tier 2 के अंदर, and that is going to be the Unite kills, but not as well in between two people, and they will survive that outburst. The clear-cut tankiness coming out for their win. Mew with a double KO. Volk is not at all stopping. Shrey फिलहाल कोशिश कर रहे हैं नारुतो को टेक डाउन करने की. He will not be able to do so. नारुतो ने यूनाइट का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया था, and they will try and take Snorlax down as well. He's just trying to buy time for his own team. एक बार स्कोर की तरफ गौर कीजिएगा जरा, क्योंकि अभी टीम फाइट तो जरूर टीम नैन्सी ने जीता है, पर एक बार बेसिस की तरफ नजर डाले तो टॉप लेन का T2 डाउन है फॉर देयर साइड. अगर इजोस की टीम ने नेक्स्ट रेजिएले की निकाल दिया तो वो तो बेस रोटम हो जाएगा, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे फॉर साइड ऑफ टीम नैन्सी. पर हाँ, आप देख सकते हैं कि अपने ड्रैगनाइट हाइपर बीम खेल रहे हैं. इससे बेहतरीन सिक्योर और कोई हो ही नहीं सकता इस गेम में, अपार्ट फ्रॉम दैट विकेट ब्लो ऑफ अर्शी कुयर. देयर गोज इन रेवेनेंट ट्राइज टू गेट सम किल्स, बट रेवेनेंट विल गो डाउन हियर. सदाव अंदर जाते हुए म्यू के ऊपर पिकअप लेंगे जरूर. ब्लिसी को पीछे रखा कंफर्टेबली स्नोरलैक्स ने, एंड देयर गोज डाउन ब्लिसी एज वेल एज ज़ोरार्क हियर. बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड कर गए थे उनके सपोर्ट करने के लिए. स्नोई टाइम पे पहुंच नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, एंड या देयर गोज एन अनदर हाइपर बीम ऑनटू म्यू. म्यू ऑलमोस्ट लो पर सेटर्स देरी खाएंगे, एंड ही विल गेट हील्ड अप अगेन. Looking from Mew, that solar beam onto Trevenant. Trevenant will go down here. As much tanky as he is, he can't really flank in. He doesn't have the mobility to go to back line, and जैसे burst Mew possess करता है, of course नहीं जाने देगा हूपा का हाइपर स्केल. यहाँ पे आ चुका है हूपा अनलीश चालू. यहाँ पे टॉप लेन को ऑब्जेक्टिव लेने का प्रयास तो जरूर हुआ है, पर ट्रेवेनेंट बहुत अच्छा काम करते हुए ड्रैगनाइट को दूर रखते हुए. There goes another portal from Hoopa trying to save Dragonite, but Dragonite will go down with a beautiful combo coming in from Mew and Trevenant here. Another team fight breaking out in the top lane here. Solar Beam से बहुत अच्छा पोक देते हुए Naruto here. Hoopa का हाइपर स्पीड बच तो जाएंगे इस बार, पर का तो नहीं है फॉर द साइड ऑफ टीम नैन्सी की. वो बैक डाउन करना चाहेंगे यहाँ पे. डेफिनेटली उन्होंने T1 तो निकाल लिया है. यहाँ पे ज़ोरार्क गोइंग इन ऑन टू ड्रैगनाइट हियर. ड्रैगनाइट विल गो डाउन. ज़ोरार्क प्लेइंग ब्यूटीफुली राइट देयर. एक नजर आ रहा है यहाँ पे. म्यू इज डूइंग देयर बेस्ट, नारुतो इज डूइंग देयर बेस्ट टू गिव दैट कोक डैमेज, फोर्सिंग हूपा टू गो टू बेस कंप्लीटली. एंड यहाँ पे ट्रेवेनेंट ने हूपा को रोक दिया है. He takes down Hoopa finally. ये जो फाइट जो इतना लंबा चला है अभी हूपा नहीं है for the side of team Tejas here. Bet 200 here. तो नैन्सी चाहेगी कि जल्द से जल्द रेक्वाजा को मेल्ट करी है. हेड गोज इन स्नोरलैक्स हाई. जो सुंदर ब्लॉक दिया है यहाँ पे ड्रैगनाइट तो चला जाएगा. सुंदर ब्लॉक था, पर स्नोरलैक्स से इतना ये नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, सस्टेन नहीं हुआ. ड्रैगनाइट को जाने से रोक नहीं पाया. That is correct, but for now, Rayquaza has been started by the side of Team Nancy. They will try and take it down, but look at their HP, it's so very low. Hoopa unleashed has been used up as well. Naruto being forced to use the Unite, and that is going to be terminated with the Unite spell. Wooden Hammer, there goes the secure, and Volk has been taken out of the picture yet again. Tejas बहुत ज़्यादा low HP, he will not be able to survive yet again. Who took the Rayquaza? Was that Team Bid 200? Yes, it actually was, and yes, जीता किसने? Rayquaza secure get Trevenant from Team Bid 200, and Shrey सीधा जाके बेस में स्कोर इन करेंगे. They've already broken all the tiers. Now they do not need to jump in for more scores. They just need to save their own tier 2s, and उसी चीज का अभी हमें वही चीज हमें देखने को भी मिल रही थी. And they're slowly just making sure कि टीम नैन्सी अब आगे ना बढ़े अपने ट्रैक पे. That was a beautiful denial and such a great secure. जो बोलता है ना खेल गए,
वेट 200 की गेम वही करी है, वो खेल गया, बहुत अच्छा सुंदर सिक्योर था यहाँ पे। रुको एक सेकेंड, गेम अभी तक खत्म तो नहीं हुआ है, कहीं खत्म नहीं हुआ है, स्कोर देखो, अभी भी शायद टीम नैन्सी पुश करके ये गेम जीत सकती है। 9, 8, 7, yes, team bet 200 desperately trying to defend and they are not gonna let team Nancy score at all. Snorlax coming back, saving that final goal coming in from and this is gonna be the game which team bet 200 takes into their victory, into their purse, and that was a game. That was a treat for the eyes to watch. बहुत अच्छा गेम चला and yes, दोनों टीम्स ब्यूटीफुली खेली है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द साइड ऑफ टीम नैन्सी, टीम बेट 200 ले जाती है ये गेम। एंड उसी के साथ साथ सदाव बीइंग द हाईएस्ट किल, द प्लेयर विद द हाईएस्ट किल्स, ही विल एक्वायर 3 पॉइंट्स। एटलीस्ट वो तो रोक लिया कि उनको 8 पॉइंट ना जाए, उनको उनसे 3 पॉइंट तो छीन लिया टीम नैन्सी ने, पर ये 5 पॉइंट विक्ट्री के साथ जाएंगे टीम बेट 200 के खाते में। जी वेल प्लेड बोथ टीम, बहुत मजा आया देखने के लिए। Absolutely, that was such a messy team fight, specifically in the end. Quickly looking at the damage numbers, Darkrai अपनी टीम से 104k डैमेज, नारुतो अपनी टीम के साइड से 106k डैमेज, वॉल्क को कंपैरेटिवली शट डाउन करके रखा होता है इस पूरे गेम के अंदर। सदाओ एज वेल एज स्नोई दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब इनटू मेकिंग श्योर कि वॉल्क उतना ज्यादा डैमेज डील नहीं कर पाया, बट दे वर नॉट एबल टू स्टॉप दैट फ्रंट लाइन जो कि आ रही थी पटेल के हाथ से, डार्क राय के हाथ से एंड श्रेय की तरफ से। दे वर नॉट एबल टू श्रेड दैट फ्रंट लाइन एट ऑल। एंड उसके बीच में तेजस with the hoop unleashed, you won't be able to do a thing to them, specifically when you're running with just an assassin composition. तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर मुझे लग रहा है उसकी जरूरत बहुत थी, ताकि आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज भी डील करो एंड टैंकीनेस भी आपके साथ हो। सो द पॉइंट दैट यू स्टेटेड कि हो सकता है कि सस्टेन फाइट्स के अंदर वो ना जीत पाए, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एंड इन दैट लास्ट मिनट, दोस लास्ट 15 to 20 seconds, उस टाइम पे टीम बेट जस्ट थ्रू बॉडीज। दे न्यू कि उन्हें स्कोर करने नहीं देना है, दे डिड नॉट केयर कि कितने लोग मरेंगे, दे थ्रू 3 बॉडीज इन द एंड। कॉफिन का डबल केओ सिक्योर हुआ था लास्ट में, इफ दे हैड 5 more seconds वो स्कोर भी कर देते एंड दे प्रोबेबली वुड हैव टर्न्ड इट अराउंड, बट दे जस्ट न्यू दैट दे हैव टू थ्रो बॉडीज एंड दे कंटिन्यूअसली डिड दैट। एंड दैट फाइनल स्टॉप ऑफ स्नॉरलैक्स विद दैट जंप, absolutely perfect, absolutely on point. Team Bet getting those 5 points and Sadao making sure that Team Nancy gets at least 3 out of this entire situation. ये मैच ना प्रूव कर दिया कि कैप्टन वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंटियर। तेजस के जो हाइपर स्पेस पोर्टल्स थे, जो ब्यूटीफुल हाइपर स्पेस पोर्टल्स थे, टीम को कहीं डाउन नहीं होने दिया। उन्हीं के वजह से एक प्रोलॉन्ग्ड फाइट इतना ज्यादा हो सका टॉप लेन में, जो दोनों टीम्स को नहीं मिली रेजिएले की। अगर रेजिएले की फॉर द साइड ऑफ टीम बेट 200 वहां पे सिक्योर कर लेते वो, तो वो बेस रोट होता डायरेक्टली, तो वो नहीं छोड़ सकते थे। रेक्वाजा के फाइट पे नैन्सी की टीम फिर डिसएडवांटेज में पड़ जाती, नंबर्स डाउन होने के कारण। तो उन्होंने प्रोलॉन्ग फाइट लेने की जरूर कोशिश तो की, पर होपा ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने टीम को ना प्रोटेक्ट किया है, प्रोटेक्ट करके रखा था। दैट इन फैक्ट लेड देयर विक्ट्री इन दिस मैच। जो पेशेंस तेजस ने उनके टीम के साथ रखा, वापस भेजना, वापस लेके आना फाइट में, वापस भेजना, वापस फाइट में लेके आना, जो बर्स्ट था उनके दो स्पीडस्टर्स कॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यू, दे केप्ट इट एट बे एंड एडिक्वेट फ्रंट लाइन भी था फॉर द साइड ऑफ टीम बेट 200। सो या विक्ट्री तो जानी थी उनके साइड, मैंने जो स्टार्टिंग से ही बताया था। और पर अभी के लिए वो मैच छोड़ देते हैं, अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वी हैव टीम मेलो वर्सेस टीम कैसी हियर। ये भी एक बहुत अच्छा मुकाबला है जो मैं लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे तीसरे मेंबर ऑफ एमजी खेलेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ टीम कैसी हियर। पर दोनों टीम्स कम नहीं है, दोनों टीम्स के पास एडिक्वेट रिसोर्सेस है और दोनों के पास अच्छे प्लेयर। देखने को तो बहुत मजा आने वाला है। क्या बोलते हो उसके? Man, I'm just waiting for them to quickly get ready ताकि हम फटाफट TS का rules के अंदर जाए. I'm literally waiting for this another action-packed gameplay wherein we're going to see yet another member of Marcos, that's Meruem. I've been following him quite a lot and
Sometimes I try to, just copy his jungling skills. And Zeta, दिल से बोल रहा हूँ, I feel horribly at them. That's just my skill difference, man. That's sad me. But again, looking in towards this match, I'm again expecting a new kind of draft. Again, we are seeing Trevenant in almost positions, so that's one thing that I'm expecting from both of these teams. But we've seen Blissey, we've seen Cleverville, we've seen Comfy. Now, इन्हीं के combinations probably हमारे सामने और आने वाले हैं. Since we saw Snorlax in the last game, I'm kind of expecting we might see Snorlax in this game as well. मे बी एंड अभी ट्री की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है. यस, आई डिडंट एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने मेरे रेगुलर रैंक शेरेड्स में रेगुलर रैंक सेशंस में इतना ट्री यूज होते हुए देखा नहीं है इफेक्टिवली. पर ग्लिट्स एंड ब्लिट्स ने मुझे बता दिया कि ट्री इज नथिंग टू टेकन लाइक इजीली. बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला है और दोनों ही मैचेस में ट्री ही था जिसने सिक्योर लिया है रेक्वाजा से और उनकी टीम को जिताया है. And yes, there's a Sableye pick coming in from the side of Team Mellow here. That's gonna be really interesting. Urshifu bhi secure kar rahe hain. They are probably going in for the Urshifu as well. I mean, both the teams are actually going in for the Urshifu. Finally, attacker weak tree को lock करेंगे अपनी टीम के लिए, and we are not seeing any Trevenant for the side of team Cassie. जब से But we have a Comfy. Yeah, there is a Comfy Garchomp and Comfy Urshifu combo maybe, and that is going to be an interesting scene to watch definitely. पर coming back to Sableye here, Sableye जब से nerf हुआ है मैंने बहुत कम देखा है लोगों को खेलते हुए. Ever since he's balanced, nobody has been playing, but he still is a game changer. देखते हैं फॉर द साइड ऑफ टीम मेलो, मे बी ये सेबलाय उनके लिए गेम चेंज करता है कि नहीं, वापस मेटा लाता है कि नहीं सेबलाय खेलने का. अभी बैलेंस्ड है, बहुत हद तक बैलेंस्ड है सेबलाय, पर लोग खेल नहीं रहे. अभी भी गेम चेंजिंग हीरो बन सकता है पर लोग पोटेंशियल देखते नहीं है, एक नर्फ के बाद छोड़ देते हैं, वो बुरा लगता है भाई. Man. And alright, we're gonna jump into the Fierce Sky Ruins, guys. Team Mellow taking on Team Cassie. Let's see which team gets the win. And कहीं ना कहीं Comfy की हम बात कर रहे थे, Comfy Trevenant सारे ही हमें इस specific draft के अंदर देखने को जरूर मिल रहे हैं. But again, it's just as you said, probably Comfy on Garchomp या फिर Comfy on Urshifu. Difficult choice, honestly. Urshifu, yes, definitely he's pretty strong, but कहीं ना कहीं बाद में थोड़ा squishy हो जाता है. फिलहाल Celot seems to be in trouble. काफी ज़्यादा aggressive खेल रहे थे. He will be surviving with his invisibility though, but I don't think he was able to secure the buff either ways, was he? Yeah, he wasn't, and yeah, invade की कोशिश तो जरूर की गई थी from the side of Team Mellow here Sableye ने, पर Melrem being smart, he secures it from Sableye in perfect time, and yeah, Sableye almost down भी हो गए थे. जैसे हमने सोचा था Garchomp and Comfy की जोड़ी बनने वाली है टॉप लेन में. I don't think कि Urshifu पे तो Comfy जाना चाहेगी, क्योंकि Urshifu पे अगर चली गई, Urshifu ऑलरेडी इतना ओपी है, he will get a buff जरूर, पर Garchomp नर्फ हो जाएगा. और ये भी देखने वाली इंटरेस्टिंग बात रहेगी स्पीड किस खेलती है कि नहीं. Urshifu, उसको लाइसेंस दिया गया भैया. पोकेमॉन Urshifu इतना अच्छा है ना, उसको लाइसेंस दी गई है पोकेमॉन यूनाइट वालों ने कि घुसना, बस घुसना और कुछ नहीं करना. उनको घुसना है, अंदर चले जाओ, उनके फ्लेक्स जोन में चले जाओ, उनके बेस में जाओ, लड़ो बस. और बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हुए MG Muram either going for an invade, he will come back to the top lane here, not letting the side of Team Mellow Urshifu to get to level 5 here. हम सब पता है कि Urshifu को एक बार level 5 का आता है तो वापस जाता नहीं है. यहाँ पे Sableye is gonna be in enemy jungle to invade. Still, जो अच्छी जो अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि MG के मेरुएम उनके जंगल में है, एक बहुत ही अच्छा साइड शॉट, बहुत ही ज्यादा बर्स्ट करने वाला साइड शॉट फ्रॉम मैच ओपी हियर, गेटिंग अ किल इन द बॉट लेन. Urshifu का डोमिनेंस जो मैं अभी बता रहा था वो दिखेगा, ऑडियंस को भी दिखेगा और हमको भी दिखेगा. बहुत अच्छे हाथों में है.
Absolutely, and there we go. Meruem again with his burst. अच्छा knock-up मिला अपनी टीम की तरफ से, and they will try to take one person out. That's going to be the second as well. Emperor, Honest Delphos will have to quickly retreat back to safety. Tier 1 तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, and that's going to be Tier 1 taken out of the picture. 165 to 36. That is the score difference, and we're going to see in the next 10 seconds both the Reggie objectives. But look at Meruem. Emperor for now will survive side by side. Meruem will have to retreat wall ke through. Dash in kara filhal. VK actually chasing him. I don't think so. That's a good idea. I don't think so. That's a good idea. Meruem किसी ने kill जरूर चुरा लिया, but they managed to make sure that Meruem survives that outplay. Man, oh man, that was such a great outplay. जैसे मैं कह रहा था अर्शिफू का डोमिनेंस, अभी अर्शिफू वाटर स्टाइल भी नर्फ हुआ है रिसेंटली, उसका बेसिक अटैक का हीट निकाल दिया है, तो वो भी कम हो गया खेलना लोगों का। एक नर्फ मतलब ये नहीं होता कि हीरो खत्म हो गया, और यही प्रूव कर रहा है मेरुएम, हमको सबको दिखा रहा है दोनों साइड से अर्शिफू से दोनों साइड वाटर स्टाइल खेल रहे हैं और सब लोगों को दिखा रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ भैया, अर्शिफू अभी भी अच्छा है, एक नर्फ से गंदा नहीं बन जाता। And you know the thing that we were waiting for? Comfy on Meruem. Yeah, that's exactly what we're seeing. That's exactly what we are seeing. तो जो healing enhanced basic attack से निकाली है, वो अब उससे ज़्यादा healing Comfy के through मिलेगी. And look at the damage, Revenant losing 50%, but gaining HP back as well. काफी अच्छी tanking उनकी तरफ से, but he will be taken down, not being able to survive that burst. Emperor will have to retreat, but will not be allowed to do so. Continuous chase from Meruem. Garchomp ने final wrap up भी कर दिया था, and they are gonna take down the tier 1. Cramo, you're not going to survive that, not at all, and Wooden Hammer भी नहीं कर पाएगा. Trevenant will probably be taken out one more time. Blissey को push back जरूर कर दिया था, but he is not going to survive the burst of Meruem. Comfy उनके ऊपर already है, he's got the healing that he needed, and there goes the Unite था. इसका भी यूनाइट आ गया फुल एचपी होते हुए मदरबोर्ड भी इन ट्रबल, ये रेजियो की ले लिया था कैसी की टीम ने उस दौरान, एंड वो घुस भी चुका है यहाँ पे। टियर 2 खतरे में दिख रहा है फॉर द साइड ऑफ टीम मेलो हियर। ट्रेवेनेंट का बहुत अच्छा हॉर्न लीड सबको एक साथ लाते हुए, पर अफसोस वो इन्हीं के तरफ टर्न हो गया। किल्स उठा रहे हैं, किल्स के साथ साथ पॉइंट्स उठा रहे हैं, और यहाँ पे T2 डाउन हो जाएगा फॉर द साइड ऑफ टीम मेलो हियर। कंप्लीट डोमिनेशन, 8 किल्स 7 असिस्ट के साथ अर्शिफू इज बीइंग प्लेड बाय टीम एमजी मेरुएम हियर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम कैसी हियर, बहुत परफेक्ट सपोर्ट आ रहा है। No, the one who's actually second in the leaderboard of the KOs, that's Espion, and they're also from the same side, and there goes in Unite. Finally beat down. He tried to survive, but Charlo के सामने he was not able to. So, and that's finally some comeback hope for the side of Team Melo. But they need to make sure to keep on moving, forward with this momentum, which they're definitely not being allowed to. So, क्योंकि Espion एक और burst के साथ Blissey making sure that they're being healed properly, and Comfy भी अब उन पे attach हो चुकी है. Mekopi still surviving. There goes Revenant. Unite भी use किया, but he will be taken down so very quickly. Look at that attacker, we can still surviving, still gaining the HP, but finally Rain से मात खाई है उन्होंने, and Meruem का support भी यहाँ पे आता हुआ. He will just make sure कि Emperor Aram is just forced out of that entire situation, because Delphox very squishy, will not be able to tank anything at all. And since Trevenant is not in the fight, they'll still try to do go in for the steal. They managed to do that. Cramorant coming in with that specific steal, and the fight continues. Meruem will try to go in towards that back line. CD में जा चुका है, उनकी skill was not able to utilize the enhanced basic attack. Still Emperor taken out, but look at VK, he's still trying to take Mech OP out of the picture, but Blissey making sure that he's surviving, and now Trevi will be taken out. What a play! And during those fights, Zeta, Garchomp नहीं था उनके साथ. It has always been a 4v5. And exactly, and still getting dominated for side of Team Melo here. Garchomp ऊपर comfortably रेजिएले की लेते हुए, और ये होगा बीच रेजिएले की। अगर ये टीम मेलो ने छोड़ दिया, और या टीम कैसी ने ट्राई किया पुश करने का, यहीं पे गेम खत्म हो जाएगा फॉर द साइड ऑफ टीम मेलो।
बट उसके बावजूद बॉटम साइड में फिलहाल पुश आता हुआ Trevenant was able to push the other people back, but look at those HPs, they're so very low. They comes in wooden hammer yet again. Team support आता हुआ, so tells a lot. Will also try and jump towards the backline, but फिलहाल Blissey को pick off करने की कोशिश. Again she is the healer of the team. You won't be able to take them down so very easily. And just look at how Meruem is just jumping on VK. VK will be he'll be healing himself back up again. And that was a great play. But looking at the situation, 1v4, Meruem trying to survive that. Comfy भी यहाँ पे आती support के साथ. And that heal is absolutely amazing. What a beautiful unite coming in from these scenes. And that's going to be Meruem taking yet another person down. दोनों team के Urshifu are the one who are just jumping in towards that back line. And both the Urshifus are the ones who are actually going in for those secures. But finally, Motherboard, he'll be caught between four. I don't think so he'll be able to survive this one situation. Infi, थोड़ी बहुत ज़्यादा low HP, but he will be able to heal himself back up. And Meruem ने अपनी टीम को वापस से join करके, they made sure that they will be the ones who will be victorious in that fight. Motherboard को कुछ भी नहीं करने दिया. You know the way Team Cassie just kited around Motherboard. उन्हें पता था they will not be able to win the fight against Urshifu. They knew they won't be able to burst him down that very easily. उन्होंने सिर्फ उसका टाइम वेस्ट करवाया. They just made sure कि वो आराम से साइड में घूमे. They just move around him, range से थोड़ा सा बाहर, but still just being close enough कि Motherboard's attention is onto them. In the meantime, Meruem just demolishing the entire backline of Team Melo. Insane play. बहुत ही बढ़िया खेले Meruem. 1 2 3 करके सारे बैकलाइन को एक बार Cramo, then Trevenant, then goes in with the eject button onto Delphox here. He didn't stop. This was like the perfect match for him. And जो Comfy का healing आ रहा है उसके साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन from the side of Team Cassie here. एक perfect composition बना के लाए, एक plan बनाया था और वो execute करके जाएंगे. Man, and this was such a crazy play कि stream भी crash होती. And now we're gonna see the last 10 seconds. And ये बस एक औपचारिकता बची है इस point पे, because we know that Team Nancy has just won this game out completely. अब दोबारा से 4 members have been taken out of Team Melo, and that is going to be it for this game. That was so internet breaking. And GG's to both the teams, man. Both the teams played really well. Unfortunately, एक का प्लान दूसरे के प्लान से बेहतर था. 2 सपोर्ट हीलर्स के साथ उतरे हैं टीम कैसी, एंड उन्होंने जो सपोर्ट दिया है अर्शिफू एंड एसपीएन को, उन्होंने निकाल दिया मैच. And look at the finishes. 18 finishes on Meruem with 135k damage. That's just the highest damage that we've seen for the entirety of the day. In fact, 171k heal. My God. 118k tanking. That's exactly what you would want in from the support of your team, and that is just a very well coordinated play. Team Melo को chance ही नहीं दिया बिल्कुल भी Team Cassie ने. But again, Team Melo, they did try. Melo on the Crammer, and they actually went in and they were able to steal away the bottom Reggie objective as well. But कहीं ना कहीं उस चीज को वो again they were not able to turn it around entirely. And I personally feel like Sableye, yes, he was trying to do a few things, but the kit was just not suited in this composition. Yeah, Sableye did his best. He all actually एक दो बार जब भी टीम काशी के अर्शिफू मरे हुए थे, Sableye was the main guy who initiated that fight, जो 1-2 किल्स अर्शिफू पे एनिमी अर्शिफू पे मिले और लेवल गेन कर लिया था टीम मेलो ने वापस, वो Sableye के एंगेजेस के थ्रू ही हुआ था. Sableye can be deadly and he tried his best to annoy Urshifu as much as he could, but unfortunately that wasn't enough. And yeah, well played. Kudos to Team Cassie, man. They outperformed the side of Team Melo, and yes, उसी के साथ साथ 8 पॉइंट लेके जाएंगे मैच के साथ. ये तो नहीं भूले, highest kills and victory 5+3, 8 points लेके जाएंगे. Team Cassie here with the MVP as well. बहुत मजा आया देखने को, तो बहुत मजा आया. Delphox constantly getting targeted, constantly getting bullied by Urshifu.
and VK जो थे, one of the costliest players into the auction here, he just couldn't protect, क्योंकि एक से बचाते तो दूसरा घुस रहा है ना. गार्चॉम भी ये देखिए ड्रैगन रश के साथ यहाँ पे, अगर तुम अर्शिफू को रोक लो तो गार्चॉम घुसेगा, गार्चॉम को रोक लो तो अर्शिफू घुसेगा. You just really can't do anything even with the eject button as well. The outplays that Meruem was giving, headache for the side of Team Mellow's tanks. It's Half the amazing. time, Amazing to watch. Animator was not in those fights 95% of the times. True. That was such a kind of domination, such a kind of play that even though they were running with a 4v5 situation in most of those fights, they were actually winning it all out. And in this entirety of the match, Animator on his Garchomp was more or less like a you can say an insurance, a backup. Okay, kahin na kahin they're able to just rely on him if in case things turning towards take that sudden turn quickly. But again, that was still an amazing match from both of these teams. Again, Team Mellow will definitely be making a few changes and specifically looking and making those decisions in that specific situation. So वो सारी चीजें हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही. फिलहाल टीम क्यासी और टीम ब्रेट के बीच में हमारे सामने मैच जरूर होने. Make sure to stay tuned. We'll be right back in 2 minutes.
स्वागत है आप सभी का वापस से ग्लिट्स एंड ब्लिट्ज के एक और रोमांचक मैच में. वी आर गोइंग टू हैव another two teams in front of us. Team Cassie will be taking on Team Bit. And जहाँ इन दोनों टीम्स की बात है वहीं पे एक और सामने आएगी, that it's going to be Volk up against Meruem. तो दोनों को ही हमने परफॉर्म करते हुए देख रखा है. We know that both the MG players they want to test their skills out against each other. तो जीता मजा बहुत आने वाला है इस मैच के अंदर. एंड बहुत एक्साइटेड हूँ भी देखने के लिए. दोनों टीम्स फ्रेश ऑफ विक्ट्री है. एक ने हराया हुआ है टीम मेलो को एंड दूसरे ने टीम नैन्सी को. एंड दोनों फ्रेश ऑफ विक्ट्रीज है. दोनों एकदम अपना हॉट स्ट्रीक कंटिन्यू करना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे. अभी वापस से हमको देखने को मिल रहा है एमजी प्लेयर वर्सेस एमजी प्लेयर. एंड या आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस मैच. I want to see क्या वॉल्क दोबारा से कृषि पोकेमोन की तरफ ही जाने वाले हैं और is he going to turn things around? He'll probably go and pick a safe pick, something like an all rounder जो कि उन्हें पता है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट सर्वाइव भी कर जाए किसी ना किसी तरह, because Meruem is definitely just gonna jump into the comfortable role that he is on, that as a jungler. तो मुश्किल में जरूर आ सकता है वॉल्क इस सिचुएशन में, but we're gonna see the draft from both the teams coming in. Slowly both of them are actually going in for those picks. This time आप भूल रहे हैं कि को लॉक किया. आप भूल रहे हैं कि बेट 200 के टीम में बोल के साथ साथ एक और गॉडली प्लेयर है जो ही है एफएस श्रेय. वो जो ड्रैगनाइट से कैरी किए हैं लास्ट मैच बेट 200 के लास्ट मैच में नैन्सी के अगेंस्ट, ही की वजह से जीते हैं. एंड इट इज गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी what he plays this time, and he goes for the Mew pick this time, and Volk is on Dodrio for the side of team Tejas, team bet 200 here, who is going to go for the signature Hoopa pick, which did amazing in the last game, right? Absolutely, almost पूरा draft ही similar रखा हुआ है सिवाय एक pick के. We're going to see Dodrio this time from their side, and that too in the hands of Volk. While all the other picks are kind of changed, this time Shrey again sitting on that Mew. He'll make sure to be playing that attacker role, but jungler कौन जाते हैं? That's gonna be the question. Is it a Mew jungle on Shrey? Maybe हमने बहुत बार देखा हुआ है कि बहुत टूर्नामेंट में Mew jungle किया जाता है. This is mainly done when there is an invade potential from the enemy side, you know. जनरली भी कर सकता है पर कॉम्पिटिटिव सीन में तभी होता है जब इन्वेड पोटेंशियल ज्यादा हो एनिमी टीम से. कोई इन्वेड करने आ जाए तो म्यू कैन सिक्योर अर्ली गेम से ही. दे हैव सोलर बीम एंड इलेक्ट्रो बॉल. राइट, एंड कैसी फिलहाल विल बी जस्ट जंपिंग ऑन टू एनिमेटर अगेन एट द टॉप साइड. जो हमने पिछले गेम में देखा था फ्रॉम द साइड ऑफ टीम कैसी, वही चीज हमें इस बार भी देखने को मिलेगी. गार्ड विद कॉम्फी almost for the entirety of the match until their jungler comes online. तो देखना रहेगा सिचुएशन क्या रहने वाली है. सिचुएशन में Meruem is the one who's jungling on Glaceon right now. आराम से पोक डैमेज दे रहे हैं, but again he needs to play safe against Trevenant. हमें पता है कि Trevenant के अगर वुडन हैमर के कांटेक्ट में आ गए तो बहुत बुरी तरह डैमेज पड़ने वाला है, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है. फिलहाल डार्क राय is the one who's surviving, will just jump back to the safety. Yeah, and an amazing sim coming in from Hoopa again for their team here. ज़्यादा देर फाइट लेते तो it would have been problem for the side of team bet 200. बट Hoopa बढ़िया तरीके से खेलते हुए. एंड इस बार Meruem सेम जंगल करेंगे बट ग्लेशियन से करेंगे. DPS से आ गए बर्स्ट डैमेज पे. ग्लेशियन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने के लिए, कंसिडरिंग दैट द लास्ट अपोनेंट्स से ये अपोनेंट्स थोड़ा ज्यादा डेडली हो सकते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके टीममेट वोल्क प्रेजेंट है एनिमी में. एंड ही डिडंट लाइक टू टेक रिस्क ऑफ गोइंग इन एंड गेटिंग कॉट, क्योंकि ऑलरेडी एनिमी को पता रह सकता है उनका लास्ट मैच देख के कि ही इज गोना गो फॉर अर्शिफू, राइट. तो काउंटर पिक्स की बात कर रहा था मैं यहाँ पे. एंड यस, इन द टॉप लेन कंफी गार्चॉम का कॉम्बिनेशन चल रहा है. ही इज एबल टू होल्ड दैट लेन प्रीटी वेल फॉर नाउ. वोल्क आएंगे एनिमी के जंगल में, अनॉय करेंगे. वोल्क द डोड्रियो पिक विल इजीली टेक डाउन ग्लेशियन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो. अगर उनको ओपनिंग क्रिएट हुई, नॉट गोना लीव दैट ग्लेशियन.
You're absolutely correct on that, but फिलहाल KC is not being left alone in their own tower. Trevi quickly just jumping in, scoring, and साथ ही साथ Snorlax का भी हमें डिफेंस में थोड़ा देखने को प्ले मिल रहा है, but quite low will actually manage to retreat in the meantime. बाकी लोग भी टीम फाइट को ज्वाइन करते हैं फिलहाल. There goes in Shrey with the solar beam. He will try to take their opponents down. Meruem is also playing very safe. They're actually making sure कि वो अपने opponent के area of control में बिल्कुल ना आए. And what a play by Darkrai. With 2 wooden hammers, he was able to take 2 of them down. Just 2 of them out of the picture. There we go. Garchomp ने भी team fight join करी है. Glaceon was able to take Snorlax out in the entirety of that fight, and it is still continuing. Darkrai takes down Meruem as well. What a play on this 7-8. And Regis के पास continuous fight होती है. Who was able to take that down, and that is going to be Shrey on the Mew. And that's a 2 KO again for Darkrai. He's just not stopping, man. He is not stopping. And yeah, this is the exact reason why Mew is being feared. Mew is being picked by both the sides here. He's a very reliable damage dealer, who is a very reliable poke damage dealer and a secure here. Though from the side of Team Bet, यहाँ पे bot lane में pressure आ रही है. उन्होंने they successfully managed to take down. They successfully managed to take down the bot lane tier 1 here. Hoopa with the portal. He will go top lane because अभी objective top lane पे आया हुआ है, and their team will need to prioritize top lane here. दोनों objectives हार नहीं सकता. नहीं, actually Bet 200 was the one who took the Regice top bot lane. Yes. Then my bad. It's absolutely fine. Even I can get confused in this situation where an Infi is going to be taken down. Actually gets quite a ton of HP back. But उनकी backline इतने में secure हो चुकी है, as they've already lost compete in that situation. Or a Meruem just jumps in towards the other side, tries to go in for that score. The score difference, Rita, 248 to 69. Volk is also, just being Volk, making sure they're picking up those Pokeballs, going in for those quick rotations onto the opposite lanes, and then jumping into the fight at the most unexpected situation. And honestly, I don't think so उनको उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ रही है, because Darkrai and Shrey, they're just doing so very well on that Trevi, on that Mew. Especially Darkrai, he's just not dying, man. He's just not dying. And the amount of burst he has, out of this world. I'm sorry to interrupt. There is gonna be an engage here in the top lane. Infi trying to replicate what the Darkrai is doing here, but with that on leech, he successfully manages to take down Trevenant, and yes, Darkrai manages to secure another objective. This Trevenant, man, even in every team till now, every objective has been secured by Trevenant. Not really the starting of this game, Regice was secured by Mew here. There goes in the drill pack here, Mew didn't secure it actually. Glaceon using her Unite move will secure the Regirock here. So on the top lane here, Hoopa used her ultimate. After pushing, directly recall करके backline आ गए, and yeah, tier 1 यहाँ पे bot lane पे give up किया है team Tejas ने, पर top lane का tier 2 निकाल दिया है इस gap में. I mean, I don't think so that trade was favorable for Team Cassie, but Team Bet is going to take that trade any day. Giving up on tier 1, taking the tier 2, man, any day, they're going to take that any day. But for now, 379 to 144. Clear cut score difference favoring Team Bet. अब देखना है कि इससे comeback कैसे करने वाली है Team Cassie, because they're not being able to replicate what their opponents are doing right now. But finally, Garchomp joining the fight as well. They are making sure push their advantage into towards their bottom side. Garchomp 2 KO के साथ making sure that finally the buff that they've been waiting for is in their hands. And is this the moment, Zeta, जहाँ पे ये सारी चीजें change करे? Because in the next 25 seconds, Regieleki will spawn, but Rayquaza भी आ जाए 25 seconds के अंदर. So I don't think so they'll even have enough time to take Regieleki down, क्योंकि Rayquaza pit पे वो control
नहीं छोड़ सकते. They need the Rayquaza. Maybe Garchomp है तो कुछ भी possible है. They can melt down anything really quickly. But I don't think both the teams will be looking forward to contest to Reggie की 5 सेकंड में वैसे भी नहीं मिलने वाला है. And Bolt seems to be in trouble here. Full heal के use से वो निकल जाएंगे पीछे. Both the Trevenants using their wood hammer. दोनों के unite खुल गए यहाँ पे. Side team bet 200 पीछे चली जाएगी, बेस में जाके वापस आएगी हुबा के मदद से. बहुत लो है एंड बच तो जाएंगे अभी के लिए. यूनाइट खुल गया है कंपी का भी. He seems to be in a lot of trouble. Yes, हुबा will damage to unsuccessfully. कंपी भी ऑलमोस्ट मर जाती पर ग्लिचन पे जाके उन्होंने जान बचा लिया है. Mew kills a beautiful solar beam here and here and Mewram comes back with that burst damage. खत्म कर देते हैं म्यू को भी. अभी तो Rayquaza पोजिशनिंग टीम कैसी के पास है तो, बट both the tanks from the side of team bit 200 have been spotted. Yeah, the huge wood hammer goes back and another great solar beam coming in from Meg OP for the side of team Cassie. Oh my god, अभी देखना ये पड़ेगा कि डोड्रियो सक्सेसफुली स्किल कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे. एंड डोड्रियो का जो ड्रिल पैक था यहाँ पे परफेक्टली गोज इन ऑन टू ग्लेशियन हियर एंड मैकोपी का सोलर बीम सिक्योर कर जाता है Rayquaza हियर. मैकोपी इज नॉट गोना वेस्ट एनी टाइम गोइंग स्ट्रेट इनटू द गोल जोन्स. They need 2 more. जो लीड में वो नहीं थे वो वापस लाना चाहेंगे. फाइट्स लेने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एक गोल पड़ गया. इट्स 344 to 391 हियर. Marching down to main bases, Garchomp and Trevenant here. होपा चले जाते हैं अपने T2 को प्रोटेक्ट करने के लिए. देखना पड़ेगा कि टीम बिट 200 टेक कर पाती है. एक और गोल एंड द साइड ऑफ टीम Cassie wins. Man, Rita, this victory that actually was going for team Bit. I am just gonna give the credit to. Wait, there was a 24 का score as well by me in the last second. I really want to see कौन सी team win secure करके गई है इसमें. That's so very close. 24 का and it was not enough for the side of team Cassie here. Unfortunately, man, that hurts. Give Volk the MVP. Give Volk the MVP. Rayquaza fight के बाद he was the one on his Dodrio to make sure कि एनिमेटर और इन्फी दोनों की पूरी शील्ड वो उड़ा सके. He made sure that those two Pokemons do not have the Rayquaza bomb to score. And that is exactly, man. And टाइम पे आके ही even tried to steal. Unfortunately नहीं कर पाया पर ड्रिल पैक से उन्होंने ग्लेशियन पे किल उठा लिया. ग्लेशियन पे किल उठाने के बाद सोलर बीम म्यू ने जो सिक्योर किया है. He didn't lose hope after Rayquaza, you know. He went back, he defended his best. दोनों का हील निकाल लिया, T2 बचाया and उस डिफेंस के कारण जीत गई है टीम बिट 200. Another victory for them and they also secure 8 points, 5 plus 3 because Trevenant के पास है highest KOs, that is 8 KOs. 8. And yeah, just an insane resilience. जो बोलते हैं ना अर्ली गेम लीड जो लिया है उन्होंने, दे मेंटेन्ड इट. सिर्फ Rayquaza फ्लिप करने से गेम्स नहीं जीती जाती सर. And that was Pokemon Unite का crazy. That was crazy. Volk with that last player, and I was just looking and I was seeing that yes, he's just shredding down the shield. जैसे ही उन्होंने Trevenant की shield पूरी shred कर दी, he targeted Garchomp. He shredded Garchomp's shield, and that's all he did. He did not force any takedowns in that situation. Just as he said, he tried to go in for the steal. He was not able to do so. He took down Meruem. Solar Beam se Mew secured the Rayquaza. And then he shredded those two shields, making sure that they do not have the Rayquaza buff for scoring. And that's 200 points that you are denying. 200. And they've just won with what? Almost around 20, 25 points? That was an amazing play from both of these teams though. Even till the last moment, इतना neck to neck competition दोनों ही teams के बीच में. Finally, team Bit going for the win.
They had their highest lead by 8-minute mark, probably in 6.5 minutes. They had that specific lead, and उस चीज को maintain करके रखा हुआ था. They made sure that even though the Rayquaza was secured by their opponents, they did not give up their entire lead, and that's how you play around with those specific objectives in that early game. GG WP to both their teams, and congratulations to Team Bit for getting their win. या एंड अगर तुम ग्राफ देखोगे तो समझ जाओगे कि लास्ट में गेम कितना क्लोज गया हुआ था, कितना क्लोज गया था. एंड आई एक्चुअली एक मोमेंट के लिए आई थॉट कि जो 24 म्यू ने डाला है उससे टीम कैसी जीत गई है, बट बहुत दर्द हुआ यार, बहुत दर्द हुआ देख के कि even after taking Rayquaza and trying their best to score, there was a comeback potential and they couldn't come back to the game. And GG's, kudos to the side of Team Bit 200. They played really well, and yeah, उन्होंने अच्छे से defend करा. And yeah, as The you next said, match was the now. MVP of the difference. Right, and now we're gonna have the match between Team Mellow and Team Wink. I'd say place your bets. I'd ask you to place your bets. Team Wink. I'm gonna place my bets for Team Wink. Really? Oh, and may I know the reason why? It's just the coordination that they brought onto the table match against Ultron DS. We saw how well the Trevenant Comfy combo was, and I personally feel like कि वो दोबारा से उसी चीज को replicate करने वाले हैं इस game के अंदर भी. And unless Team Mellow has actually made a counter strategy against that, I don't think so they'll be able to pull that off. They have the potential to do so, but they need to have an ace up their sleeve. अगर वो उस चीज को लेकर आता है हमारे सामने, then of course they'll be turning things around. But as of now, I think Team Wink has a little bit of an edge in this game. Okay. And I say, what if I told you that I think otherwise? Then I definitely want you to tell the audience the reasons. Yeah, I'll tell you the reason. टीम मेलो के टीम में दो ऐसे प्लेयर है जो स्काई ई स्पोर्ट्स के टॉप 14 टीम्स में से, एंड दैट समथिंग दैट टीम विंक डजंट हैव हियर. मे बी एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, बट दे आर प्रूवन कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स. एक बुरा मैच जाने की वजह से आई डोंट थिंक यू शुड लुक डाउन ऑन देम. जो मेरुएम ने अर्शिफू से जो घमासान, उसको क्या बोलता है, चल छोड़िए. मैं जो बोल रहा हूँ कि यस, प्रूवन प्लेयर्स है मेलो की टीम में, एंड दैट्स अ बिग डील. जो विंग की टीम में अभी एक ही नजर आ रहा नहीं, एक्चुअली वो नजर आ रहा है. आई एम वेरी सॉरी, दोनों के साइड में. ओके, तो इक्वल का, मे बी इक्वल का बैटल है. क्या बोल रहा हूँ? It's totally going to be depended on, I personally feel like it's going to be depended on towards our top lane. जिसके पास top lane में advantage आएगी, वो उस advantage को turn करेंगे बाकी पूरे मैच के अंदर. Because again, just as we were talking about, Mutinant on his Trevenant, Wink on the Comfy, वो लोग top lane में try करेंगे अपनी advantage को रखने का, and they are going to turn it in the 6th minute mark probably, wherein they'll start to rotate towards that mid and towards those bottom objectives. तो अगर वो रोटेशन को या तो टीम मेलो बीच में रोके, या फिर दे मेक देयर ओन रोटेशन फ्रॉम टुवर्ड्स द टॉप टुवर्ड्स द बॉटम ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट इट्स अ फुल ऑन 5v5 फाइट, या तो वो उस चीज को निकाल के दिखाए. सो ईदर ऑफ दोस टू थिंग्स विल प्रोबेबली बी द की प्ले इन दिस स्पेसिफिक मैचअप. अब देखना है क्या सिचुएशन रहेगी. मेलो ऑन पर्पल साइड, विंक ऑन द ऑरेंज साइड. ट्रेवेनेंट कॉम्फी, Gardevoir, Mew, Slowbro. A decent front line, some amazing heal, and a great poke damage. On the other hand, it's Gardevoir, Glaceon, Trevenant, Wigglytuff, and Absol. They've got poke, they've got assassination, quite a lot of it. They've got a good amount of tankiness, and Wigglytuff will also act as a good, crowd controller. So if they're able to pull out that combination, and अगर वो backline shred कर देते हैं Gardevoir, they'll actually have an upper hand. If they're not able to do so,
I think so. Wink will have a much easy sail in this match. But देखना है how things are going to turn around, guys. तो यह Sky Ruins के अंदर हम आ चुके हैं. Team Melo on the purple, taking on Team Wink on the orange. Definitely जो points आपने point out की है, I totally agree with it here. And जो familiar top lane का pick था from the side of Team Wink here, they have gone with it, and I'm a fan for it. Yes, but Absol top lane is also something new that we are seeing right here in this tournament till now. And Absol जो है वो really backline को जाके मार सकता है, जो म्यू और गार्डेवर है उनको बहुत बच के खेलना पड़ेगा Absol के इधर से. And on the other hand they also have Slowbro who completely shuts down Absol, वो backline में घुसने नहीं देता. उस टाइम पे आते हैं from the side of Team Melo Glaceon, जो Slowbro के चलते हुए Absol को अगर रोक लिए तो Glaceon can go berserk and get the necessary kills for the side of Team Melo here. Both the teams have a really good draft. I'm still looking forward to who will win though. आपको जैसे ही मैं ये बात बोल रहा था, यहाँ पे एक पिकअप होता है from the side of Team Melo on to Trevenant there. Unfortunately, healing Tempi से इतना enough नहीं आया. And yeah, laning phase है, jungler ने already top lane पे एक उठा लिया है. In contrast to the enemy jungler here, तो टॉप लेन में थोड़ा सा लेवल एडवांटेज जरूर टीम मेलो की तरफ होगा. इधर बॉट लेन में दो ट्रेवेनेंट एंड ग्लेशियन का कॉम्बो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखा रहा है, क्योंकि म्यू के सामने फेस ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे, और म्यू का सिक्योरिटी बहुत है. Absolutely correct. But जैसे कि हमने बात करी थी, Mutinent has got the level 5 and now he will probably start to go in for those rotations. Mew or Slowbro, they managed to take down both the attackers in the bottom side. Wigglytuff की rotation भी आती है top side से, and they will try to stop the scoring from Wink, and they've actually managed to do so. लेकिन वहीं पे top side में Mutinent ने भी score कर दिया है, so still the score difference is favoring Team Melo right now, but Team Wink is also catching up. And अब जो rotation उनके Trevenant की तरफ से आएगी, that is what might change the tides of the fight. I want to see Team Melo कैसे रोकती है उस चीज को. Both the teams, they're showing a little bit of an aggression towards the bottom lane. Probably दोनों ही bottom regi objective को prioritize करे. But side by side, Absol top side में there is the diff, there is the comfy diff coming in. फिलहाल bottom side में Hilua HP काफी low. He actually jumps in forward and now seems to be in a troublesome situation, but no, he'll actually be able. Wait, what was that? Wigglytuff? What was that? Wigglytuff? Will you survive? No, as Mew logs that and answering attack. मुझे सच्ची में लगा था बहुत देर पहले मर गई है Wigglytuff, but the rollout surviving here goes down Absol to that giant wood hammer from the side of Team Cassie here. Team Cassie के जंगलर को थोड़ा सा एडवांटेज है because they leveled up first than the other Gardevoir here. उनके पास ultimate है, Team Melo के पास नहीं है, and ये चला वो ultimate. He manages to take down Glaceon here. काफी साथ Gardevoir भी फंस गई थी, almost बच निकली, but they chase her down here. Mew goes down here as well for the side of Team Cass. Actually, yes, and look at the situation. Mutinent retreat भी कर जाएंगे. He's actually going in 1v3 to 2v3 for now. Will quickly take the berry. Will quickly steal it away. Absol is also not gonna survive that. But in the meantime, tier 1 के ऊपर पूरा burst आता हुआ. Lots of support coming in. Team Wing turning the fight around in their favor. But उसके बावजूद they were not able to save the tier 1, even though they're getting those kills. Even though they're getting those knockouts, वो scoring stop नहीं कर पा रहे Team Melo की, so that is a massively problematic thing. But देखना है, will they actually be able to secure the registry? Yes, they will be. पहले Gardevoir को उन्होंने take down कर लिया था to make sure that there is no contest whatsoever, taking the registry away. Now they are probably they probably might turn in their attention towards the regi towards the top, but अभी उनके पास एक मेजर डिसीजन है जो कि उन्हें लेना है.
Do they go for Regieleki or they prioritize bottom lane tier 1? And for now, it seems they are prioritizing the Regieleki. एंड बॉट लेन में वैसे भी ऑब्जेक्टिव है नहीं यहाँ पे। विंग की टीम ने ऑलरेडी बहुत अच्छा बढ़त बना के रखा है। मेलो की टीम कम बैक करते हुए आ रही है। कभी भी टीम फाइट में देखा जाए तो जंगलर ऑल्दो टीम मेलो का टीम विंग से इतना ज्यादा आगे नहीं है। Gardevoir is trying her best to carry the side of team Wink. You know, here goes in Absol with the pursuit, and he gets the sucker punch of a huge ultimate, huge unite coming in from Sol here. Another GG ultimate from the side of Team Mellow here. Gardevoir takes down, and there goes the Revenant with comfort. Mutinant was the only sole surviving member. Gardevoir from the side of Team Mellow made sure to burst everyone down, but they were not able to take Mutinant down because of the presence of Comfy on him. Emperor को दोबारा से shut down करना पड़ेगा Team Wing को, else they will be able to have that those fights. But again, the way Team Mellow is playing, the way Wigglytuff and Absol, they're just diverting that aggression on towards them. Wigglytuff is creating the opening by just jumping in between those 5 people and tanking almost all of that burst damage. And in the meantime, Absol is the one who's just getting the skills of their opponents baited out and then going in for his burst damage. And in the meantime, Gardevoir long range with the snipes there. That's absolutely amazing. Look at that Wigglytuff again tanking. They are the ones who are still surviving. Who takes Regieleki? It's going to be Wing who wins that fight, but Satisat Revenant was also taken down in that fight. Gardevoir, Emperor just playing amazing on that Pokemon, and they'll be able to easily defend that 159 to 100 total score difference. जी हाँ, almost Regieleki का fight हार गए थे Team Wing here, but they decided to take the Regieleki and not push it, not stress it. They come back here, बहुत damage लेते हुए Absol from Solar Beam of that Mew. जंगल के डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो टीम विंग के जंगलर का जो गार्डी है वो थोड़ा सा ज्यादा ही लेवल्ड अप है, बट इस टीम फाइट के बाद एम्परर भी उस लेवल के हो गए हैं हर्ष के मुकाबले। एंड अभी तो अल्टीमेट्स दोनों के पास भी है, आई मीन यूनाइट मूव्स दोनों के पास भी है। रेजिएलेकी के पास जो फाइट होगा दोनों चाहेंगे कि ये बचाए यहाँ पे, एंड दैट फ्यूचर साइट ऑफ गार्डेवोर एम्परर ने यूज किया है उसके से सिक्योर हुआ है। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर साइट इज बेटर देन साइकिल, मेरे लिए तो है भाई। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है, आई थिंक दैट फ्यूचर साइट इज बेटर देन साइशॉक। One Piece fans' future sight is just a little more different thing, but again, it's time for Rayquaza 159 to 100. 59 का score difference है, उतना ज़्यादा नहीं है. This has been a comparatively very low scoring match, but again, wait, what was that possession from Trevenant and what is insane amount of speed, still surviving, still standing, but Mutinant is also doing exactly the same. Absol will actually try and take down towards the back line. He wants to survive, and what a smart outplay. Look at that, he's just wasting time. But again, he was finally taken down and the fight is going in favor of Team Wink. Look at how slow Glaceon is. He will not be able to outrun a Comfy and a Trevenant. You know, Trevenant with the help of Magical Leaf right there. They were not letting Absol to go backline and reach Gardevoir, not even escape Glaceon. Glaceon भी escape नहीं कर पाया वो Magical Leaf से. At the end, Trevenant catch up कर चुके थे. यहाँ पे एक refight होगा जरूर. इसी दौरान टॉप लेन के tier 1 पे टीम विंक ने गोल कर दिया है, जिसके साथ वो लीड में आ चुके हैं. अभी टीम मेलो को रेक्वाजा लेने की बहुत जरूरत आ गई है, या फिर सिर्फ स्नीकी इन गोल्स करे. यहाँ पे इन द बॉट लेन देख सकते हो कि म्यू एक और स्नीक गोल के लिए गए हैं. क्या ये गोल हुआ है? 82 का गोल हुआ है. तो बॉट लेन पे कंटेस्ट जरूर होगा. सिर्फ टीम विंक को इतना ही करना है कि वो बैकआउट कर जाए. एप्सोल ने किल उठा तो जरूर लिया है म्यू से, एंड डाउन म्यू गार्डेवोर किल उठा दिए ग्लेसियन से. all they need to do is defend for next 7 seconds here. स्लो ब्रो टॉप लेन में ट्राई कर रहे हैं गोल करने का, पर विगलीटफ
आई मीन विगलिटफ ट्राई कर रही है टॉप लेन में गोल करने का, पर लोग ब्रो उसको नहीं करने दे रहे, एकदम बचा के रख रहे हैं। एंड इसी तरह टीम विंग गेट्स द अपर हैंड ऑन टू टीम मेलो एंड दे बीट टीम मेलो। सो जी composure shown by both the teams actually। मेरे को नहीं लगा था कि रेक्वाजा लाइक मेरे को लगा था कि रेक्वाजा लेंगे, रेक्वाजा पे कंटेस्ट करेंगे, पर दोनों टीम्स ने ऐसा नहीं किया। दोनों टीम्स ने रेक्वाजा नहीं लिया, पर विंग के टीम ने ये काम जरूर किया है कि जाके बैक कैप करे, जो कि टीम मेलो के साइड से हुआ नहीं। And they did it not just once, they did it twice. Yeah, One with the Trevenant and Comfy combo, and then Mew. They managed to do it twice. And they were in lead, and then they solidified their lead. And team fights तो वो जीत ही रहे थे continuously. We've been seeing that they were not able to break through that front line of Mutinant and Comfy. That was just an insane combination from the side of Team Wink. And again, Zeta, 8 finishes on the hands of Trevenant. He did not deal a mass. 9 finishes on the Gardevoir actually, वो भी ध्यान दीजिए। With 79,000 damage on Harsh, that's exactly what you expect from your Gardevoir. But Emperor be continuously was just making sure that he also gets in those pickoffs, he also gets in that damage. VK, look at that heal on his Revenant, 48,000. That's more than the heal on Mutinant. But even after that, we're just not able to somehow get towards that back. They were not able to take them down. First, in the starting phases, they were managing to do that. But kahin na kahin, baad mein, when towards that mid and late game, they were not even allowed to just go in towards that backside, and that's just because of the presence of Comfy and Trevenant in that front line. They were just slowing them down so much. And that magical leaf did pay out a lot for the side of Team Wink here, especially in that Rayquaza fight. Absol कभी backline पहुंच ही नहीं पाया। एम्परर के साइड के देखा जाए तो जब भी हम देख रहे थे उनके फ्यूचर साइड बहुत परफेक्ट लग रहे थे, केओस तो उठा रहे थे। Even though being behind in farm than the other jungler, he was doing the best he could. Unfortunately, जो प्लान किया था वो नहीं हुआ। रेक्वाजा के फाइट से पहले जरूर टीम मेलो लीड में थी, जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, पर एक बार जैसे ही रेक्वाजा फाइट स्टार्ट हुआ, टीम विंग में दिमाग लगाया कि हम नहीं करेंगे बाबा, रेक्वाजा नहीं करेंगे, आपको नहीं करना, हम भी नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि हमको चाहिए, पर हमको नहीं चाहिए, हम बैक कैप से जीत जाएंगे, और ऐसे ही जीत गए। Oh, just a beautiful play coming in from both of these teams, honestly. And kahin na kahin, the bets that we placed in the early game, I really thought that Team Melo might be able to pull it off because of the pick of that Wigglytuff. They were able to create so much space for their own backline that they were the ones who were actually winning in those survivability fights in the game. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद टीम मेलो has found that breakthrough that we've been waiting for, but they were just not able to capitalize onto that in towards that later stages of the match. But that is going to be it for this specific match, guys. We still have 2 more matches remaining, and the next one is going to be between DS and Nancy. We will witness that match in the next 5 minutes as we go in for this short break. In the meantime, poll में एक क्वेश्चन आया था कि क्या आप पोकेमॉन यूनाइट इंडिया के डिस्कॉर्ड सर्वर पे हो, yes or no? If you're not and you want to join so that you stay up to date with all the amazing tournaments, make sure to check the link in the description, join in the Discord server so that you do not miss, and you also register your own team for the tournaments that we continuously host. We will be right back in 5 minutes, guys. Make sure to stay tuned.
And there goes the match. The match starts here between the side of Team Ultron and Team Nancy here going into this tournament. Of course, it's going to be a hard match to tell which team is going to be winning here. But let's look at the drafts here from the side of Team Ultron. It's going to be a Trevenant, Mew, Clefable, Lucario, and Rua. I mean, also Rua in future. When once level 5 hit. And for the side of Team Nancy, it's going to be Tyranitar, key combination, and Mew and Trevenant. The Trevenant is still this, common point here for both the teams. All the teams actually, every single team has been playing Trevenant. They are not leaving Trevenant behind. And only Trevenant can counter Trevenant with the Horn Leash. So it's viable, I guess. And in the bot lane, of light screen Electro Ball with enhanced basic attack. Naruto bursting. Pumpkin almost down to 0 HP, but Pumpkin barely survives here. There's gonna be a bot lane skirmish. Both the junglers here have arrived to bot lane. Yeah, both the junglers are here in the bot lane. Here they're gonna be contesting for bot lane. But the jungler of the side of Nancy will be able to take down Lucario without any problem here. Trevenant almost goes down, but the goal scored here. The goal he scored almost saves him. He goes down again here. So Rua in a really bad position. Disapple here will go down. Yes, even Disapple will go down here. Luca goes in. Maybe he went in too far. Glaceon and Mew bursting him down to half HP. Pops his passive. He's gonna go back, and the skirmishes of the early game keep continuing. Yeah, absolutely. And to be honest, I really want to see how Snowy is going to get his level 9. He's 5 right now. He needs to get that level 6. But he will not at all be winning his lane, especially when he's up against a Clefable and a Trevenant. Yes, of course, there's a Blissey on your side. You'll also get the heal. But I don't think so that's anywhere near to the amount of heal that Clefable and Trevenant will show up. And they're actually going in for those scores. Yet the lead is still in favor of the side of Team Nancy. तो अभी देखना है कि क्या situation रहेगी इस गेम के अंदर, because of course Tyranitar पे Snowy would want कि वो buff ले, but उसके बावजूद Trevenant will not allow him to do that, because we know कि level 9 T-Tar is just unstoppable. But how are you going to reach that level 9? वो सबसे बड़ा question रहने वाला है. He's got the ancient power. He will be able to secure वो आखिरी B स्कोर इन करने भी जाएंगे, but he'll be taken down. कि अब Snowy survive करने वाले हैं इस burst को. And the eject button saves the day here. Yes, T-Tar को जरूर लगेगा level 9 उनका असली power spike लाने में. There goes in a beautiful solar beam onto Lucario. Trevenant finishes the kill right there. Mew trying to go in, उनको देखना है कि objective का HP कितना है, so that he can use solar beam to secure it. But Trevenant is not allowing that to happen here. Disapple goes in, uses his unite move, tries to secure it, but shows Naruto ने एकदम picture perfect secure यहाँ पे दर्शाते हुए हमको नजर आए हुए. And both the Mews doing amazing job using the solar beam here. और मैं कुछ बोल रहा था वो बाद में बात करेंगे. यहाँ पे नारुतो ने एक और सोलर बीम पिक्चर परफेक्ट डाल के ऑलमोस्ट ट्रेवेनेंट को डाउन किया है. हाँ, ट्रेवेनेंट को डाउन जाएंगे जरूर. यहाँ पे लुकारियो ने ट्रेवेनेंट को डाउन किया है. रुक ही नहीं रहा ये फाइट. क्लोज कॉम्बैट comes out and सोलर बीम अगेन. तो अनफॉर्चुनेटली उनके लुकारियो डाउन जाएंगे. Going in and almost Blissey का secure. No, Blissey का score हो गया. They almost tried to defend it, but Nancy बहुत cheekily goal कर रही है. I almost thought कि yes. Even I thought कि शायद गोल रुक जाए, but नहीं, वो बिल्कुल आखिरी सेकंड पे हो ही गया था. और उसके बावजूद अभी these fights, Zeta, they're just so very long. रुक ही नहीं रहे दोनों ही टीम वाले, because दोनों के पास एक same kind of idea है that they need to survive to win the fights. But कहीं ना कहीं अब yes, that was exactly what I was going to point out कि T-Tar का level 9 hit हो चुका है, तो he will be dealing that true damage ancient power से, and he will be very viable in fights.
जस्ट लाइक दैट क्लेफेबल यूनाइट जरूर यूज कर रही थी सरवाइव करने के लिए, बट लुक एट द फर्स्ट डैमेज, दो स्टॉर्म्स का मेहमान, एंड दैट्स द बर्स्ट ऑफ टीटान। एक एचपी टावर की 35 का टोटल स्कोर जाएगा, 166 का अभी टोटल स्कोर। वजन है भैया, वजन है, लेवल 9 तक वजन है, और एक बार लेवल 9 आ गया तो दे आर अनस्टॉपेबल, जस्ट अनस्टॉपेबल। इनको क्राउड कंट्रोल के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। एंड कभी कभार जब एंशिएंट पावर हाथ में हो, आउट ऑफ कूल डाउन हो, तो वो नहीं हो सकता। And Peter, Jesse Peter bane, the rampage goes on. There goes the Regiel, top objective secured by the side of Team Nancy here. Nancy is looking in trouble here. This apple going in onto Nancy will pick up a kill. Trevenant trying to zone out Mew here. Mew will stay back. अपने वैसे Naruto uses his Unite move. And an amazing prediction Unite move coming in from this apple here to get a kill onto Naruto there. Naruto almost this apple को outsmart करते हुए, पर ये हो गया कि Unite move यूज करके this apple ने outsmart कर दिया Naruto को। And top lane में Glitz trying to push that Regielity into the turret here, पर अफसोस नहीं होने वाला। बॉट लेन में अभी भी स्कर्मिश चालू है ऑब्जेक्टिव के लिए, पर किसको मिलेगा क्या पता। यहाँ पे डिसएपल बहुत ट्राई कर रहा है अपना फेंट अटैक, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं पूरे क्राउड कंट्रोल को डॉज करते हुए। वापस कट और पिक अप अ किल ऑन टू नैंसी राइट देयर। Mew will secure the Regirock here, and again an amazing combo coming in from Zoro arc onto that Mew। फाइनली डाउन जाएंगे ट्रेवेनेंट और टीटा की मदद से वो, पर डिस्ट्रक्शन दिखा दिया भैया डिसएपल ने। मैन कितना क्रेजी आउटप्ले वहां पे निकल के आया था, दैट वाज सीरियसली वेरी अमेजिंग। बट अगेन अब सबसे मेन सवाल यही रहने वाला है कि कैसे रोका जाएगा टायरानाटार को, क्योंकि ट्रेवेनेंट दोनों ही टीम के फिलहाल दिल जस्ट डू द ट्रेवेनेंट थिंग्स। हमें पता है कि वो सीधा बैकलाइन में कूदेंगे, दे विल ट्राई टू गो देयर, जो कि अभी वो कंटिन्यूअसली यूज भी कर रहे हैं। लुक एट दैट, तो थिंक कॉफिन की काफी ज्यादा लो एचपी है, विल बी टेकन डाउन। म्यू ने साथ साथ बुकारे को फिनिश किया था, ये परमानेंट रेडी हो चुका है। बट लुक एट द टर्न अराउंड, 4 मेंबर्स देखते ही देखते सीधा they've been taken out, and the only one that's remaining is DS on the Cliffable, and that's just And यहाँ पे टॉप लेन Regiel की the last objective for this game spawn होते हुए, second last actually, Rayquaza is the last, Rayquaza से पहले last objective spawn होते हुए नैंसी की टीम देरी नहीं करेगी उधर जाने के लिए। they are continuous, they are straight onto the top lane and they will rip it on time। यहाँ पे नैंसी की टीम को बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा लीड मिलते हुए, क्योंकि Regiel की प्रेशराइज करेगा T2 पे टॉप लेन पे। एंड यहाँ पे Rayquaza स्पॉन होगा, जैसे ही स्पॉन हुआ इंस्टेंट रिप कर रही है टीम अल्ट्रॉन। यहाँ पे अल्ट्रॉन ऑलरेडी नजर आते हुए, सिक्योर किसको मिलेगा, ग्लिट्ज लेके जाती है सिक्योर। लुकारियो ऑलमोस्ट ट्राइड, you know, he tried to use his ultimate, he tried to use his unite move and try and secure here. There goes down the surrender for the side of Team Ultron DS, but a dominant performance shown by Team Nancy here. जैसे ही टीटार बने, गेम फ्लिप हुआ, and there's GG's for you. ऑनेस्टली जीटा मेरे को एक सेकंड के लिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं जैसे टॉप साइड में जो रेजी लेके सिक्योर किया है टीम नैंसी ने, एंड आई वाज जस्ट सेइंग कि टीम डीएस पूरी की पूरी जस्ट टोटली इग्नोरिंग द रेजी लेके की जा रहा है, एंड दैट टू ऑलमोस्ट व्हेन यू ऑलमोस्ट रीच द फाइनल स्ट्रेच, दे वर फोकसिंग ऑन Rayquaza। सारे के सारे मेंबर्स वर जस्ट इन दैट Rayquaza पिट। अगर टीम नैंसी रेजी लेके पे कैपिटलाइज करने की सोचती, Rayquaza उनके हाथ से उसी मोमेंट जाने वाला था। That was 100%। तो एक गैम्बल खेला गया था टीम डीएस की तरफ से यहाँ पे, एंड such an amazing gamble। इतना हमें नॉर्मली गेम्स में देखने को नहीं मिलता, such a great gamble। yes, उनके फेवर में नहीं गया, because Nancy just decided कि they're going to ignore Reggie, लेके सीधा जाएंगे Rayquaza। They managed to win the fight, they managed to win the Rayquaza। So that was basically the final nail in the coffin, but that was so smart move। And side by side, looking at the statistics, Nancy Bunsell, 115k heal on the Blissey। That's the healing queen for you। एक और बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, और ये गैम्बल पे ऑफ कर भी सकती थी फॉर द साइड ऑफ टीम अल्ट्रॉन डीएस भी, क्योंकि
कि उनके पास लुकारियो के रूप में एक बहुत ही अच्छा सिक्योर मौजूद था। उन्होंने बोला जाओ रेक्वाजा तुम रेजिएले की ले लो, जितना टाइम तुमको रेजिएले की लेके रेक्वाजा पे आने को होगा तब तक हम रेक्वाजा मेल्ट कर चुके होंगे। पर ये अफसोस हुआ नहीं, जब टाइम पे पहुंचे अभी भी हाफ एचपी बचा था रेक्वाजा का, पर तभी भी वो लोग सब कंटिन्यू कर रहे थे रेजिएले की मेल्ट करने के लिए। पता नहीं कैसे लुकारियो किस पोजीशन में अटक गए थे, इतना बड़ा बैटल चल रहा था कि हम लुकारियो पे ध्यान नहीं दे पाए। ग्लेशियन लेके जाती है आइसिकल स्पीयर्स पे Rayquaza, and that is the GG for the side of team. Um, for the side of team Ultron and actually. Nancy. Yep. Yeah. And Man. Oh, that was amazing play. But again, the points still going in favor of Team Nancy. वो अपने आज के दोनों मैचेस हमारे सामने जीत के ले जा चुकी है। अब अगला मैच गेस व्हाट जीतता, अगला मैच भी टीम नैन्सी का ही हो। That's going to be between Team Wink and Team Nancy. हमने दोनों ही टीम्स को देखा है अपने अभी पुराने मैचेस जीतते हुए, बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मैच दैट विल शो अस कि आज किसकी विन स्ट्रीक कंटिन्यू रहने वाली है और किसकी यहीं रुकने वाली है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सच एन अमेजिंग मैच बिटवीन बोथ ऑफ दीज टीम्स। दोनों की ही टीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन है, दोनों की ही टीम को एक आइडिया है कि यस उन्हें स्टाइल से खेलना है, बट टीम नैन्सी ने कहीं ना कहीं आई वुड से they've shown the variety, they've shown the variability, and they've shown the adjustment. So मेरे हिसाब से they are the ones who might have a little bit of an edge over their opponent. But देखना है कि टीम विंक कौन सा ड्राफ्ट हमारे सामने लेकर आई। true that, I completely agree. और जैसे ही दोनों टीम्स ने अभी तक खेली हुई है ये टूर्नामेंट, मजा आया दोनों टीम्स को देखते हुए। और जो कंपीट रेवेनेंट का पहला मैच से लेके अभी तक लेके आ रही है विंग की टीम, हमको दिखाते हुए आ रही है विंग की टीम। आई थिंक आई एम गोना बेट ऑन देयर टीम अगेन, बिकॉज मैं तो प्यार में पड़ गया हूँ भाई। मैं टॉप लेनर्स खेलता हूँ और टॉप लेन में ये कॉम्बो देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली एक मेटा ब्रेकिंग कॉम्बो, एक न्यू टाइप ऑफ टॉप लेन दिखाई दे रहा है बहुत दिनों के बाद। तो ट्रेवेनेंट कब खेलने का प्लान है जीता? और लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, ट्रेवेनेंट कब स्पैम करने का प्लान है जीता? जैसे ही आज का स्ट्रीम खत्म हो। Just as I was expecting, but अभी मुझे पता है सारे ऑडियंस वेट कर रहे हैं आखिरी मैच कब शुरू होगा। बस 5 मिनट और we're gonna begin the match real quickly. We're just getting all the players ready, guys. And in the meantime, आप दबा दो, कमेंट डाउन करो कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है आज का गेम, एंड साथ ही साथ कौन सी टीम जीतने वाली है ग्लिट्स एंड ब्लिट्ज सीजन 2। मुझे पता है सारे लोग अपने फेवरेट टीममेट्स को सपोर्ट जरूर करेंगे, सो क्लियर कट थ्रो दैट इन द कमेंट सेक्शन एज एवरीवन इज वाचिंग, एवरीवन इज वेटिंग टू हियर दैट सपोर्ट। एंड इन द मीनटाइम we're getting both the teams ready. अब Zeta has placed his bets on Wink. I am leaning towards Nancy. देखना है ड्राफ्ट में हमें पता चल जाएगा ऑलमोस्ट 60% ऑफ द गेम क्या रहने वाला है। Still expecting at least 3 picks to be exactly the same between both of these teams. जिनमें से एक है Trevenant. I'm just going to stop talking about Trevenant क्योंकि आज के दिन में इतना ज़्यादा हो चुका already that even the audience might have just learned every single thing. पता है कि वो 2 हथौड़े मारेगा, सबको लाइन में लाएगा, नहीं 1 हथौड़ा नीचे मारेगा just to finish them off. Because that's the combo every Trevenant has been using. देखो मजा तो आ रहा है ये ट्रेवेनेंट आउटप्लेस देके। मुझे पता है मुझे आ रहा है, मुझे पता है ऑडियंस को आ रहा है, मुझे पता है तुम्हें आ रहा है, तो फिर ट्रेवेनेंट की बात क्यों ना करे। पर हाँ, रेपिटेटिव तो बहुत हो गया और ऑडियंस भी पक चुकी होगी, तो एक बार ट्रेवेनेंट को छोड़ते हैं। एंड मुझे ये बताओ कि आपको लग रहा है कि वापस ब्लिसी टीटर का कॉम्बो उठाएगी टीम नैन्सी? Honestly, chances तो हैं. They can actually decide to quickly go for it because क्योंकि जहां पर ऑनलाइन हमारे सामने वो मैच चल रहा था डीएस और नैन्सी का, साइड बाय साइड में ऑफलाइन मैच भी चल रहे थे। तो अभी देखना है क्या सिचुएशन रहने वाली है। They're still going to pick it. I think that they might, but just as how we've been seeing new hands from the side of Nancy, काफी चांसेस है कि हमें दोबारा से एक नया काइंड ऑफ ड्राफ्ट देखने को मिल सकता है। अभी वीनस और शो जरूर किया था लेकिन शायद अभी उसे लॉक इन ना करे, बट मी आई वांट टू सी द म्यू ऑफ किलुआ।
क्योंकि किलुआ का जो म्यू है, the way that guy has been playing म्यू, इट जस्ट सीम्स कि आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, अगर कोशिश करोगे आप सोलर बीम से ही सीधा स्ट्रेड हो जाओगे। ओके ओके, यहाँ पे देखा जाए तो विनोसर एक्चुअली टीम नैन्सी ने नहीं, बल्कि टीम ने ले लिया है। ले लिया है। एंड या, और नैन्सी की टीम के देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल द पिक्स आर सेम, यू नो, ग्लेसियन, ट्रेवेनेंट एंड ब्लिसी, पर इस बार उन्होंने उठाया है कार्टिवोर एंड एमजी स्नोई खेलेंगे ज़ोरोआर्क। अभी तक हमने काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखे डिसाइपल से ज़ोरोआर्क का, एंड सो देखते हैं शायद टीम एमजी स्नोई अपने टीम के लिए यही रेप्लिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। मे बी लास्ट मैच का इंस्पिरेशन ही ले लिया उन्होंने, मे बी हो सकता है, पर ये इंटरेस्टिंग कॉम्बो देखने के लिए, आई मीन इंटरेस्टिंग कॉम्बो ओपोनेंट साइड में भी है एक, दैट इज वीनस और कंपी। देखना ये पड़ेगा कि कौन सा टीम ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन से आती है, कौन सा टीम बेटर अपना प्लान एक्सिक्यूट कर सकती है। I still think कि विंक वापस ट्रेवेनेंट कॉम्फी के साथ ही जाने वाले हैं। On Venusaur, not until he's level probably 13, जब पेटल डांस का नेक्स्ट अपग्रेड उनको मिल जाता है and he becomes like almost unstoppable. But फिलहाल Harsh will just focus on the farm, क्योंकि of course we know Venusaur, he'll just quickly focusing on the farm in that early game. But side by side we know कि Zoroark and Glacian they come online fairly early, so काफी chances है कि early game probably will lean in towards the side of team Nancy. And अगर वो उस टाइम पे अपनी लीड को स्नोबॉल कर देते हैं, then they will have the upper hand in towards that mid game. क्योंकि लेट गेम में अगर वो ट्रांजिशन होगा, then we know that Venusaur is just going to wreak havoc, and उसके ऊपर कंपी का सपोर्ट अगर आ गया, so you definitely do not want to face that at all. But फिलहाल we're probably seeing that burst damage, अभी सर्वाइव तो कर जाएंगे नारुतो, also there for the support of his teammate. Venusaur retreat back भी करते हुए, दोनों टीम के जंगलर ने टॉप साइड की तरफ रोटेशन को प्रायोरिटाइज किया है, पर स्नोई he wants to play in the little सी, कि वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने ओपोनेंट फार्म दिख जाए उनको ताकि उसे चुरा सके, बट that's such a great jungling by Harsh, उसने एक भी क्रीप नहीं छोड़ा। And yeah, there goes an invade coming in from Zoroark onto Venusaur. Venusaur का मेगा ड्रेन, आई मीन गीगा ड्रेन परफेक्ट टाइमिंग पे लगते हुए, एंड दे मैनेज टू सिक्योर देयर ओन ब्लू बफ। Zoroark बहुत ही लो एचपी में भागते हुए almost KO होते हुए, here Coffin applying that pressure with that great wood hammer, that mighty wood hammer, along with Sadao here is on Gardevoir। अच्छा लग रहा है देखते हुए कि अभी तक तो एंगेजेस कोई नहीं हुई, सब ऑब्जेक्टिवली खेल रहे हैं। Absolutely, but score difference देखिए जीरा 53-2। फिलहाल टीम नांसी is doing an amazing job, स्कोर नहीं होने दे रही है अपने ओपोनेंट का बिल्कुल, and the early lead that we've been talking about उसको फिलहाल मेंटेन कर रखा है लेवल 7 ग्लेशियन। That's an amazing lead, but उसके बावजूद the comfy Trevenant combination, जैसे ही वो फाइट्स के अंदर आएगा तब फाइट्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है, that is going to be the question of the current second। फिलहाल स्नोई क्योंकि लेवल 5 हिट कर चुके हैं, विल ट्राई टू प्ले अ लिटिल मोर एग्रेसिव, रेड बफ ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं वो गांव, एंड दैट्स अ पिक ऑफ ऑलरेडी इसी के ऊपर, दैट वाज अ वेरी गुड पिक ऑफ टू बी ऑनेस्ट। बट साइड बाय साइड ज़ोरोआर्क विल जस्ट फोकस ऑन क्विकली गोइंग इन फॉर दैट स्कोर, एंड लुक एट दैट, बीज दोनों ही टीम सिक्योर करने की कोशिश में फिलहाल म्यूटेनेंट इज द वन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू गो इन फॉर दैट बर्स्ट, एंड इन द मीन टाइम नारुतो ने बॉट दे दी है, so we probably might see the first team fight जो कि होगी bottom and look at how quickly Zoroark has made that rotation, Venusaur के ऊपर वो जा चुके हैं, and in the meantime उनकी टीम Reggie Steele को focus down कर रही है, so that is a massive play, लेकिन Blissey नहीं है उनके पास, so they have to quickly retreat back क्योंकि Trevenant top side से आ रहे हैं कॉम्पी के साथ, and this might actually turn around the team fight क्योंकि they've actually managed to take Mew down, and that was a good play by Glacian। एंड साथ ही साथ दे आर मेकिंग श्योर कि म्यूटेनेंट के ऊपर भी कंटिन्यूअस बर्स्ट डैमेज हो, फिलहाल विल बी टेकन डाउन एज अ ट्रेड ऑफ, बट द डैमेज हैज बीन डन क्योंकि ज़ीटा ज़ोरोआर्क सीधा टॉप में रोटेट करके 20 का एक और स्कोर कर चुके हैं। ज़ोरोआर्क ट्राई कर रहे हैं कि जब भी मौका मिले वो स्टैक कर ले अपने अटैक विथ को, एंड ही इज डूइंग दैट परफेक्टली वेल। टीम नैन्सी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, मौका नहीं खोना चाहती कि ऑब्जेक्टिवली नहीं खेले, वो
अगर आप देखोगे तो ज्यादा ओवर कमिट नहीं कर रहे, वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं और वो पीछे हो रहा है, स्कोर कर रहे हैं, जिधर भी मौका मिले वो पीछे हो रहे हैं। अभी म्यूटेनेंट अकेले दिख गए थे ऑफ पोजीशन में, बहुत पीछे आ गए थे, तो उन्होंने पकड़ लिया उनको। कंफी ऑलमोस्ट बचते हुए डिफेंड नहीं कर पाएगी। वीनोसॉर यहाँ पे आते हुए ग्लेसियन का यूनाइट मूव चल गया, वीनोसॉर का भी यूनाइट मूव चल गया, ऑन लीच ऑन टू दैट वीनोसॉर राइट देयर, ऑलमोस्ट गेटिंग अ केओ ऑन ट्रेवेनेंट राइट देयर, बट वेरी हैप्पी हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा था कंफी वीनोसॉर का कॉम्बिनेशन वो नहीं चला, एंड Wink right here on the back step of this match. Honestly, अगर उस टाइम पे वहां पे कीलुआ होते, then they would have managed to out sustain the entire team Nancy, and वो सीधा टर्न अराउंड कर देते उस पूरी फाइट को। I can bet you on that, क्योंकि वीनसॉर जितना उन्होंने सरवाइव किया है, the amount of feel that he got Comfy, that was absolutely insane. But अभी देखना पड़ेगा, Zoroark will be taken down in towards that bottom side. Gardevoir के HP भी it's a little bit low, but definitely does not want to fight Harsh head on in that situation. 155 to 2 का टोटल स्कोर डिफरेंस है। अभी हर्ष कोशिश करेंगे सरवाइव करने की। ही नोज कि उन्हें गार्ड करना है, बताओ कि एचपी काफी ज्यादा लो है, विल मैनेज टू रिट्रीट बैक टू सेफ्टी, बट साइड बाय साइड कॉफिन ट्राइंग टू गेट द टियर 1 आउट बॉटम साइड से। He does not have that one score, and Blissey के पास full 38 है, so I don't think so they'll be able to take that down so very easily. Side by side Kilo अपनी Unite का इस्तेमाल करके आ चुके हैं। That's gonna be the Unite from, and look at that continuous pick off, Venusaur को सीधा pick off कर दिया, and Glaceon in the meantime takes down Blissey. So that is the opening जो कि टीम नांसी was looking for। 203 to 2, 201 की टोटल स्कोर लीड है अभी उनके पास, and it is kind of clear Zeta कि इस टाइम पे टीम विंक is just looking to play in for the Rayquaza। You know, अगर स्कोर्स की तरफ ध्यान दे तो only 2 goals scored coming in from the side of team Wink here। बहुत ही पीछे चल रहे गोल्स के हिसाब से एंड बेसिस के हिसाब से भी। ट्रेवेनेंट ऑन द टॉप लेन ट्राइंग टू स्प्लिट, स्प्लिट पुश, स्प्लिट प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस स्प्लिट पुश की जगह पे यहाँ पे उनका T2 जो कि बॉट T2 है वो जाने वाला है और चला भी गया है यहाँ पे। ब्लिकी गोइंग इन ट्राइंग टू हील दैट Venusaur, बट Venusaur goes down। Zoroark going, wrecking havoc, going in, wrecking havoc। Unite move भी उनका बाहर आता है, and they pick up a kill onto Blissey right there। 3 members down for the side of Team Wink। They seem to be in trouble। Only 2 bases left, that is their main base and top का T2। बहुत ही अच्छे पकड़ में नजर आते हुए टीम नांसी यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और बहुत डिसिप्लिन में खेल रहा है। Absolutely, and उन्हें पता है उन्हें किस टाइम पे रिट्रीट करना है, बट फिलहाल नांसी विल बी टेकन डाउन, एंड इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज स्टिल इट्स अराउंड अ मिनट फॉर द Rayquaza, एंड इस टाइम पे दे वुड जस्ट ट्राई एंड डिनाई द Rayquaza, बट लुक एट दैट हर्ष अच्छा डैमेज डील करते हुए। फिलहाल कॉफिन की एचपी वाज लो, गॉट हिमसेल्फ हील बैकर, बट साइड बाय साइड हर्ष की एचपी देखिए कैसे 0 से हुई है 100। दैट्स एन अमेजिंग प्ले, एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन कंफी के साथ। The Venusaur Comfy combo that we've been waiting for Zeta, वो हमें देखने को मिला, and that is Zoroark taken down during his combo। Finally Venusaur को भी pick off कर लिया है क्योंकि Gardevoir और Glitz आ चुके हैं, and Trevenant भी नहीं survive करेंगे इस burst को। Comfy को भी take down कर लिया गया था, and it's the burst that we've been talking about। अभी जो कुछ भी हुआ पूरा हुआ है फेवर ऑफ टीम नांसी के। उनको डिले करना था रेजिएल की, डिले भी हो गया और साथ ही साथ टीम फाइट भी जीत गए, उन्होंने रेजिएल की ले लिया। अभी Rayquaza के टाइम पे टॉप लेन पे प्रेशर होगा रेजिएल का, क्या पता, देखते हैं। टीम विंक अगर पहले ही मेल्ट कर दे Rayquaza से पहले ही अगर टीम नांसी अलाउ करती है तो या इट्स नॉट गोना बी सच अ ह्यूज थ्रेट, बट उस मेल्ट करने के चक्कर में बॉट लेन कर रेजिएल सोचेंगे, एंड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, just as I suspected वही हुआ है। रेजिएल की गया है स्पॉन। टीम नांसी ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठी हुई है, म्यू के पास जाके एंड स्लोई इज गोना गो फॉर द बैक कैप, एग्जैक्टली व्हाट ही शुड बी डूइंग। उनको जरूरत ही नहीं है Rayquaza लेने की, वो जाके और अपना लीड बढ़ा रहे और अपना लीड फोकस कर रहे हैं। मीनवाइल द टीम ऑफ नांसी is gonna do their best trying to prolong this fight। A beautiful ultimate coming in from Gardy here। Gardy almost takes down, बट अनफॉर्चुनेटली अफसोस लेवल डिफरेंस की वजह से Gardevoir ज्यादा कुछ नहीं कर पाई यहाँ पे। टीम फाइट हारते हुए टीम विंक, और यहाँ पे आ जाता है सरेंडर। सो जीजी, वेल प्लेड बोथ द टीम्स डिड अमेजिंगली वेल। नांसी की टीम बहुत डिसिप्लिन में खेली, उन्होंने बोला नहीं आज नहीं,
इस मैच हम पूरे डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे, थोड़ा भी ओपनिंग नहीं देंगे और एकदम परफेक्टली खेले. दे वर लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग ई-स्पोर्ट्स प्रोफेशनल टीम एक्चुअली. And look at the KOs. Naruto के पास है सिर्फ 7. That's the maximum amount of KO in this game. And Snowy 203 का total score with a rating of 84. 3 pickoffs, 8 assists. Coffin on the Trevenant with 12 assists. Man, that's insane play. That's so objective based play from both of these teams. That's so very fun to watch. And again, Zita, बहुत मजा आया पूरा मैच देख के. And this is exactly just as you said. Proper esports play, objective focused fights ली दोनों ही teams ने. And they knew कि उनके विन कंडीशंस क्या है, एंड दे न्यू कि ओपोनेंट के विन कंडीशन क्या है. उन्हें बस उसके अगेंस्ट खेलना था. उन्हें पता है ट्रेवेनेंट एंड कॉम्फी का कॉम्बो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा उनके लिए. सो दे जस्ट अवॉइडेड द फाइट. जब भी ट्रेवेनेंट उस टाइम पे आया, दे ईदर पिक्ड ऑफ द बैकलाइन या तो उसके आने से पहले, और या जब ट्रेवेनेंट आया उसके बाद दे जस्ट काइंड ऑफ रिट्रीटेड, फाइट को डिवाइड किया, एंड देन दे जस्ट मैनेज्ड टू फिनिश देम ऑफ. एंड यू कैन लुक एट द स्कोर डिफरेंस. पूरा टाइम they were the ones who had the score lead since the starting minute. बहुत मजा आया यार मैच देख के. बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों टीम्स के साथ से. ये 8 पॉइंट लेके आगे जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ टीम नैन्सी हियर. एंड अफसोस की बात है कि ये है कि टीम विंग ये मैच जीत नहीं पाई. का मोमेंटम रुक गया. पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा पर दोनों की टीम से. मैं बहुत इम्प्रेस हुआ ये मैच. Absolutely. दोनों ही टीम्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज लेकर आई थी, एंड एंड में जाके वे फाइनली फाउंड कि टीम विंग की कॉम्फी ट्रेवेनेंट स्ट्रैटेजी को कैसे ब्रेक करना है. We made sure. Yeah, and one more thing I'd like to add is that Comfy and Glitz India गया था. उनके पास एक रिलायबल टैंक नहीं था. उन्होंने सोचा कि उनका वीनस और उनका फ्रंट लाइन बन जाएगा, पर वीनस और अनफॉर्चुनेटली जब भी आगे जाता था वो सबसे पहले सबसे पहले मर जाता था. Even before their supports can heal that and Venus और like perfect balance था क्राउड कंट्रोल का भी टीम नैन्सी के पास, और बर्स्ट की भी और पोक की भी. एंड इट वाज ऑल इन ऑल अ कंफर्टेबल विन फॉर द साइड ऑफ टीम नैन्सी. इट वाज लाइक अ वन साइडेड मैच. अगर ग्राफ देखा जाए तो हमने ग्राफ में देखा था कि कैसे स्टार्टिंग से ही लीड जो बना के रखी थी टीम नैन्सी ने, वैसे ही बना के रखी है. Absolutely, and that is going to be it for the day, guys. जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया उनको एक बहुत बड़ा शुक्रिया. फाइनल्स होने वाला है अगले हफ्ते को, एंड टॉप 2 टीम्स अगर आपको जाननी है कि कौन सी है तो आप फॉलो कर लो पीयू के पेज को ऑन इंस्टाग्राम. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी. सो मेक श्योर टू क्विकली जंप इनटू द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फॉलो द इंस्टाग्राम पेज ऑफ पोकेमॉन यूनाइट, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे एंड आपको पता रहे कि कौन सी 2 टीम्स है जो फाइनल्स में जाने वाली है, किन 2 दिग्गज टीमों का एक फाइनल क्लैश होगा नेक्स्ट वीकेंड. सो मेक श्योर टू जॉइन अस नेक्स्ट वीकेंड एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे. दिस इज Scared Yet, your caster, with me, Zita, my co-caster. Thank you so much, guys. Hit that like button, click on that subscribe as well, and the bell notification. बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है उसको, otherwise updates नहीं मिलेंगे. हम लोग आपसे जुड़ेंगे अगले हफ्ते. Thank you so much for staying tuned. Have a good night.